very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm greetings on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies. Thank you everyone for gracing this occasion. Allow me to welcome you all to this induction program for BCA and BAJMC students for academic year 22-23. I request all the dignitaries to please come forward for lamp lighting ceremony. I request Dr. Shivendu Rai, HOD BAJMC, to felicitate Dr. Ajay Kumar, Director TIAS. Now I request Dr. Deepak Sonkar, HOD BCA, to felicitate Dr. M.N. Jha, Dean Academics. I request two students from BCA as well on the stage, please. It's an immense pleasure to welcome you all event semester academic session 2022-23. We wish you all the best for a grand success in the event semester. Without looking back, hope you all will do great. So on this occasion, I welcome on your behalf entire BAJMC and BCA students, few of them standing over here on DAS. It's a great pleasure. Thank you. Now I request Dr. Gopal Thakur, HOD BJMC second shift, to give the glimpse of the new semester to BJMC students. Respected Director Sir, Dean Sir, our faculty members, colleagues, and my dear lovely students. World cannot change. The day you start changing, world will also change. So my dear students, today really it's a great day because after the examination, you are now shift, or you can say that you can now be a part of our Tecnia Institute final year student as well as the second year students. So dear student, welcome you all the induction program, especially for journalism and mass communication student as well as BCA student also. हमारे अब्दुल कलाम सर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी. किसी बच्चे ने पूछा उनसे कि किसी स्टूडेंट ने पूछा उनसे कि ये बताओ कि इंडिया की होप क्या है, इंडिया में सबसे अच्छा चीज क्या है और इंडिया का होप क्या है. और दूसरी चीज ये पूछा गया कि इंडिया में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम पीछे. तो पीछे इसलिए है, बैक इसलिए है, बिकॉज क्यों मैं ये बात कर रहा हूं कि पीछे है या बैक है, इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट किए जाते हैं. राइट? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था कि दिस कंट्री का विजन क्लियर हो, वो बहुत आगे बढ़ेगा. और सेम एप्लीकेबल अगर आप लोगों का कोर्स का अगर विजन क्लियर है, अगर कोर्स का आपका विजन क्लियर है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल. विजन क्लियर होना चाहिए. मिशन, विजन और मिशन. अब आपको कंप्लीट करना है, 3 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करना है. ऑल गाइस, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, 3 इयर्स की डिग्री आपको कंप्लीट करना है. तो कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली क्या है कि अचानक से कंप्लीट कर लोगे या नहीं, 1 by 1. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड आफ्टर दैट सिक्स्थ, 1 by 1. राइट? तो 1 by 1 जब कंप्लीट करोगे तो आपका विजन कैसे है, फर्स्ट कैसे कंप्लीट करोगे, सेकेंड कैसे, थर्ड कैसे, फोर्थ कैसे, फिफ्थ कैसे. आफ्टर दैट देन वी कैन अचीव द गोल, दैट इज मिशन, जो आपका फुलफिल होगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीज गाइज, कि आप लोग विजन और मिशन को अपने दिमाग में रखो. अगर सेट नहीं कर पा रहे हो तो सेट कर लो. इवन आपके कैरियर में विजन और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट दैट मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, विदाउट विजन मिशन. सो यू मस्ट हैव टू सेट योर माइंड
कि विजन और मिशन को सेट कर लो, बहुत जरूरी है। राइट गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, और नेक्स्ट है आपका दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। लाइफ का ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है जो क्लियर होना चाहिए। कोर्स का ऑब्जेक्टिव, गेटिंग माय पॉइंट, ऑब्जेक्टिव कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस पढ़ने के बाद उसका मेन जो आउटकम है वो क्या है। आउटकम का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं उसके हिंदी में, परिणाम, रिजल्ट क्या है, राइट, यही है आउटकम। तो आउटकम को आप लोग कोर्स जो सीख रहे हो, ये कर रहे हो, उसका आउटकम क्या है। और तो ये बेसिक चीज है कि ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन को अपने लाइफ में जरूर यूज करो, और यूज करने के साथ साथ एक जरूरी चीज है कि उसको इंप्लीमेंट करो। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा करना। एंड डू नॉट एडमिट द हियर से, हियर से वर्ड को बिल्कुल भूल जाओ। हियर से मतलब क्या होता है, कहा सुनी, किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया, टीचर ने कहा और आपने सुन लिया और उस चीज को अवॉइड कर दिया, नहीं ऐसे मत करो। या आपके पेरेंट्स ने कहा, या हायर एजुकेशन में जाओगे, किसी ने कहा, किसी फ्रेंड ने किसी को कुछ कह दिया, तो आप लोग क्या करते हो, हियर से को एडमिट करते हो। डू नॉट एडमिट द हियर से गाइस। अगर खुश रहना चाहते हो, अगर हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए, गोल सेट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपने फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में नेम फेम चाहते हो, तो डेफिनेटली है डू नॉट एडमिट द हियर से। ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं आ जाता हूं, एवरीवन अवेयर ऑफ दैट कि आवर टेक्निया ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के जो चेयरमैन सर हैं वो है डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता सर। जब मैंने काम किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि काम किया, आप यहां पे एक लंबी लिस्ट है, आप देख रहे हो बहुत सारे टेक्निया ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक अंडर अम्ब्रेला है, टेक्निया अम्ब्रेला, उसके अंदर ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ग्रुप है। लाइक टेक्निया के आपने देखा होगा कि साथ साथ जो टाइस है, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, लाइक अष्टावक्र है, ऑर्लिंस स्कूल है, आर्ट एंड डिजाइन है, ऐसे करके हमारे पास एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, वो सारे इतने इंस्टीट्यूशंस है। जब हमने इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना सीखा, तो मैंने चेयरमैन सर से एक ही चीज सीखा, if the circumstances going to up or down, if you can, definitely you can manage the all things in a very proper way। तो ये मैंने सर से सीखा कि कैसे मैनेज किया जाता है, चाहे आपके पास कितना भी वर्क हो, आप उस चीज को इजी वे में कैसे सीक्वेंस कर सकते हो। तो ये मैंने चेयरमैन सर से सीखा है, और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के कोर्सेज के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, और जितने भी आप ये लंबे लिस्ट देख रहे हो, एवरीवन इज विजिबल है, ये जो लिस्ट है आपका, ये जितने लंबे लिस्ट देख रहे हो, इन सारों में हम लोग इंडल्स है, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं बेटरमेंट के लिए, राइट। एक होता है कि भाई बेटरमेंट के लिए आप लोग क्या काम करते हो, एक पॉलिश होना बहुत जरूरी है, साइन करना जिसको कहते हो, तो वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे डायरेक्टर सर, आप देख सकते हैं, he has 27 years of teaching and industrial experience in the various level guys। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी टाइम अगर हम डायरेक्टर सर के पास जाते हैं, कोई भी इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, तो सर बड़े फ्रैंकली वे में एक फ्रेंडली ट्रीट करते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार वर्क का प्रेशर होने के बाद भी अगर उस एनवायरनमेंट में आप जाते हो, तो डेफिनेटली है कि आपका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है, तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर। और सर के बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस, इवन द कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, और उसके बाद सिंपोजियम या बहुत तरह सेमिनार, कॉन्वोकेशंस वगैरह, इनमें सर के जो स्पेशली इंटरनेशनल और नेशनल जो पेपर हैं सर के, मोर देन मेरे ख्याल से 30 और 25, अगर अप्रॉक्सीमेट किया जाए तो 60 से भी अबव मिलाकर अगर बात करें 100 समथिंग, सर ने इतना एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली अगर ये एक्सपीरियंस इतना एक्सेल कर रहे हैं सर, तो डेफिनेटली है कि सोचो कि आप लोगों का फ्यूचर डेफिनेटली है अगर एजुकेशन फील्ड में बहुत ही अच्छा है, एज वेल एज कॉर्पोरेट फील्ड में। सो थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर। अब नेक्स्ट हमारे डीन सर, एकेडमिक डीन सर की बात करते हैं। सर स्पेशली मार्केटिंग और एमबीए में, सर के पास जब मैं कभी भी
मैंने जो एक्सपीरियंस सर से सीखा है, जो मैंने गेन किया है गाइज, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके मेरे साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होने वाली है। और ये प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप किन से मिलते हो? एकेडमिक डीन डायरेक्टर डीन सर से मिलते हैं हम लोग, अपनी प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में सॉल्व करते हैं। सर में एक बहुत बड़ी खास बात है डीन सर में कि जब भी जाते हैं कोई भी काम होता है, करते हैं, काम कर लिया, लेकिन सर सबसे अच्छा जो काम करते हैं कि सर हमें एक आप ये कह सकते हो बड़े डिसेंट स्टाइल में हमें हंसा भी देते हैं किसी भी सिचुएशन में। और दूसरी बात यह है कि सर में एक बहुत अच्छी टैलेंट है कि सर कितना भी काम होगा, कितना भी सर बर्डन में होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सर के फेस पे स्माइल होता है और कहते हैं कि ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो सोचो कि ये कब पॉसिबल होगा जब इतने सारे 37 इयर्स का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर गाइज, और ये एक रिमार्क सेट करना है। बीजेएमसी के एचओडी, इवन बीजेएमसी, और सर का जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर के साथ। मैंने भी सर के साथ काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब काम का आपको पता है कि सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, टाइम टेबल बनाना, बहुत सारी चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बहुत सारी चीज़ है कि सर उस टाइम बड़े प्यार से करते कि हो जाएगा, टेंशन मतलब हो जाएगा। अच्छा आप नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं गोपाल सर मैं करूंगा। तो ये जो कहते हैं ना कि सर दूसरों का बर्डन अपने ऊपर लेके वो काम जो एक स्मूथ वे में करवाते हैं, सर के लिए तो बिल्कुल कैपिंग बनता है। शिवेंदु सर स्पेशली, थैंक यू सो मच सर। और चलो एनी हाउ मैं अपने बारे में खुद बता देता हूँ। मुझे भी इंडस्ट्री में, स्पेशली आईफी यूनिवर्सिटी में और इंडस्ट्री में तकरीबन अगर आप देखा जाए हार्डकोर जो मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस है 16 मोर है। अगर वैसे काउंट करेंगे, कॉर्पोरेट इंक्लूड करोगे तो 21 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर आप मुझे सपने में पूछ सकते हो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं इजी वे में आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। और तकरीबन 100 से ज़्यादा मैंने पेपर पब्लिकेशंस है मेरे, 100 से ज़्यादा मैंने बहुत सारे सेमिनार वगैरह अटेंड किया है। तो ये सारी चीज़ है। अब हमारे विपुल सर हैं जो बहुत ही सीनियर है, विपुल सर के लिए क्लैपिंग एक बार। और डॉक्टर विपुल प्रताप सर, बेसिकली सर का जो R&D और इनोवेटिव जो प्रैक्टिस है वो सर उसमें बहुत ही एक्सेल है। हम लोग इनसे, सर से बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। इनोवेटिव और प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें सर से हमें सीखने को मिलता है, स्पेशली फॉर द रिसर्च और इनोवेटिव। तो थैंक यू सो मच विपुल सर। अब हमारे डॉक्टर रजनीश सर, एवरीवन अवेयर ऑफ दैट, स्पेशली फॉर बीजेएमसी स्टूडेंट। यार आप अवेयर हैं सबसे। रजनीश सर जब टीचिंग में आते हैं उस टाइम वो क्लास के बीच में कभी किसी की सुनते नहीं है। पढ़ाना है तो पढ़ाना है, देना है 100% देना है। अगर आप नहीं भी सीखना चाहोगे, सर की क्लास अटेंड कर लो, आप सीख जाओगे। दिस इज द ग्रेट क्वालिटी रजनीश सर, थैंक यू सो मच। और आप लोग क्लैपिंग कर सकते हो मैम के लिए। हमारे आप लोग जानते होंगे जागृति मैम को, जिन्होंने वर्चस्व के लिए बहुत सारी मेहनत करी थी और किन सिचुएशन में वर्चस्व के लिए उन्होंने काम किया था, इवेंट के स्पेशली, तो आप लोग जानते ही हो। चलो क्लैपिंग हो जाए उन मैडम के लिए। और मैम का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। नेक्स्ट शाहीन बानो मैम। तो गाइस शाहीन बानो मैम, जो एक्सपीरियंस है मैम का, आपने देखा होगा कि मोर देन 3 to 5 इयर्स का मैम का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे रिसर्च पेपर मैम ने लिखे हुए हैं और वो रिसर्च के चीज़ आप लोगों को बताते हैं। बिकॉज जर्नलिज्म में बिना रिसर्च और R&D के मेरे ख्याल से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो वैलिड डाटा का। नेक्स्ट है डॉक्टर रजनी मैम। रजनी मैम से भी आप लोग अवेयर होंगे, नहीं तो बच्चों रजनी मैम का भी आपने देखा होगा कि मैम बहुत ही अच्छे तरीके से शेपअप बिल्डअप करने में मैम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास करती हैं, बहुत ही अच्छा योगदान करती है मैम। थैंक यू सो मच रजनी मैम। नेक्स्ट हमारे अमित सर। अमित सर, सबसे बड़ी बात, अभी 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड कि आप लोग का टेलीविजन प्रोडक्शन आने वाला है, टीवी, हार्डकोर टेलीविजन, स्पेशली फॉर 4th सेमेस्टर स्टूडेंट।
और सर का एक्सपीरियंस टेलीविजन इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट आप देखा जाए तो 16 ईयर्स का सर का एक्सपीरियंस है टेलीविजन में, टेलीविजन सेक्टर में। राइट गाइस, 16 ईयर्स मैंने रखता है टेलीविजन से रिलेटेड। अगर आप प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया में सर करते हैं और टेक्निया टीवी को भी सर देखते हैं। उसके बाद हमारे आप लोग जानते हैं सर के लिए, चलो क्लैपिंग कर दो एक बार सर को। मिश्रा सर कूल टीचर में से काउंट किए जाते हैं, सर बहुत कूल है। और जब क्लास लेते हैं तो क्लास में आपने देखा होगा पब्लिकेशन से रिलेटेड सर जरूर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को क्या पता है कि हमारे टेक्निया का न्यूज़पेपर का नाम क्या है? यंगस्टर। गाइस, पता है आप लोगों को या नहीं? चलिए, यंगस्टर न्यूज़पेपर है और मैक्सिमम आर्टिकल स्टूडेंट की तरफ से आता है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट। इवेंट मैनेज करना हो, फ्रंट डेस्क ऑफिस देखना हो, एडमिशन सेल देखना हो, तो आप डायरेक्ट किससे बात करते हैं? राइट। तो आप लोग मयंक सर के बारे में अवेयर होंगे, 7 इयर्स का सर का एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली है, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होती है, इवन ये प्रेशर के बाद भी सर आपके क्लास में आते हैं और आप लोगों को रेडियो या टेलीविजन से रिलेटेड चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से आपको बताते हैं। और हमारे बीच में है दीपक सर, मिस्टर दीपक सर हैं, जो न्यू फैकल्टी है, परसुइंग है, पीएचडी कर रहे हैं सर अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। और सर का 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं जब सर से मिला तो सर को बहुत ही एक्सपीरियंस है। सर के लिए ताली आप लोग बजा सकते हैं सर। एक बार सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाएं। ये आपके सर हैं, आपके सब्जेक्ट आपको ये सर पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा चीज आप सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रियंका मैम। तो प्रियंका मैम कितना आप लोगों को मेरे ख्याल से स्पेशली इवेंट के लिए मैम काफ़ी आप लोगों को सिखाते हैं। टेलीविज़न प्रोडक्शन में रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, चाहे इवेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो या डिफरेंट क्लब से, तो मैम बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। और हमारे साथ है नेक्स्ट ज्योति मैम। ज्योति मैम का मास्टर्स MBA है, मैम ने 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, नेट क्वालिफाइड है मैम, PhD करती है मैम। और साथ में गाइज एक चीज़ और है कि मैम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम स्पेशली टेलीविज़न प्रोडक्शन में बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं, तो मैम से भी आप टेलीविज़न प्रोडक्शन आगे फ्यूचर अगर बनाना हो प्रिंट और रेडियो और टेलीविज़न में, तो मैम बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट है नितिन यादव सर। नितिन यादव सर को आप जानते होंगे। नितिन यादव सर आप लोग की क्लास भी लिया होगा और सर आज एब्सेंट हैं बिकॉज ऑफ सर सफरिंग फ्रॉम सम फीवर और इलनेस, तो सर नहीं है। और हमारे बीच है अदिति मैम। अदिति मैम फर्स्ट ईयर को स्पेशली मैम ने, सेकेंड ईयर को भी आप लोगों को पढ़ा। अदिति मैम नेट क्वालिफाइड है, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इवन इनमें मैम आरजे और एंकरिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों, अगर आप आरजे और एंकरिंग वगैरह सीखना चाहते हो तो मैम द बेस्ट ऑप्शन। सोनिया मैम है। सोनिया मैम ने परसुइंग PhD से कर रही है, अभी इवेंट को हैंडल कर रही है। मैम क्या स्पेशलाइज्ड है इवेंट में, तो इवेंट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। गाइज नाउ कम टू द दिस इज ऑल आवर अबाउट द इंट्रोडक्शन पॉइंट रिलेटेड टू आवर फैकल्टी मेंबर्स, जो आपको इस सेमेस्टर करंट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। नाउ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, प्लीज अटेंशन प्लीज एवरीवन। नाउ द अपकमिंग सेमेस्टर, जो इवेंट सेमेस्टर जाने वाला है आप लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनना और इंप्लीमेंट करना आप लोग, क्योंकि रोड प्रैक्टिस टाइम हैज टोटली चेंज्ड, चॉक एंड टॉक टाइम हैज टोटली चेंज गाइस। रोड प्रैक्टिस, रोड मीन्स पता है ना क्या होता है? रटना, प्रैक्टिस, जो आप रट के लिखते हो, वोमिटिंग करते हो पेपर पे, वो रटना बहुत अलग चीज हो गया। अब हम बात करेंगे कोर्स का आउटकम क्या है, कोर्स करने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला, उसके लिए क्या करते हैं हमारे टीचर, हमारे मैनेजमेंट या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर है, वो क्या करते हैं उसके लिए, आप लोगों के लिए कितना हम पॉलिश करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। तो आप लोगों का इवेंट सेमेस्टर कहां से स्टार्ट होता है गाइस? सेकेंड, फोर्थ और 6th,
तो मैं फोकस करता हूं सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में कितने 3 इलेक्टिव या 2 इलेक्टिव? गाइस ध्यान से सुनो, कोर पेपर 3, 2 इलेक्टिव्स। कोर पेपर कितनी है? 3, और इलेक्टिव कितने हैं? 2। और उसके बाद 2 इलेक्टिव में एक आपको चूज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो एक और चीज, मैक्सिमम आपका कितना क्रेडिट है? क्रेडिट मैं बता देता हूं आपको, क्रेडिट कितना है? 156 क्रेडिट है। और डिग्री अवार्ड करने के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 ईयर क्या कितने क्रेडिट चाहिए आपको? यू मस्ट हैव टू अर्न हाउ मेनी क्रेडिट? 150। बिना 150 के आपकी डिग्री अवार्ड नहीं होगी, ये प्लीज अपने माइंड में सेट कर लो। क्लियर है? 150 क्रेडिट करने के लिए आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट और आपका जो कोर सब्जेक्ट है 3, हर सेमेस्टर में आपका 3 इलेक्टिव और 2 कोर पेपर होगा। मैं सही कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? 3 कोर सब्जेक्ट होता है और 2 इलेक्टिव होता है। इसका मतलब आप लोगों का टेंशन नहीं है यहां पे। नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर इज टोटली बेस्ड ऑन टेलीविजन प्रोडक्शंस, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, और साथ में सपोर्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। और अगर कोई भी बच्चा रिपोर्टिंग और एंकरिंग में जाना चाहता है, इलेक्टिव कोर्स वो सेलेक्ट कर सकता है, स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो इसमें भी आपका 3 कोर पेपर है, 2 इलेक्टिव पेपर है। 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं। 6th सेमेस्टर गाइस, मैक्सिमम गाइस 6th सेमेस्टर को ध्यान से सुनो। 6th सेमेस्टर में आपका 3 पेपर है। ये न्यू सिलेबस है जो फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। पुराने सिलेबस में मैं बताता हूं, 3 आपका थ्योरी पेपर होगा, राइट? मीडिया मैनेजमेंट है, ग्लोबल मीडिया सिनेरियो है और एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन है, और एक आपका होगा फाइनल प्रोजेक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, स्पेशली जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? 16 क्रेडिट का सिर्फ फाइनल प्रोजेक्ट है, ये आप ध्यान से रखना। 16 क्रेडिट, तो क्रेडिट कितना अर्न चाहिए आपको? 150। अच्छा एक बात बताओ, सिलेबस जब चेंज होता है या कोर्स चेंज होता है, आप लोगों का ओल्ड सिलेबस है, गेटिंग माय पॉइंट? ओल्ड सिलेबस के हिसाब से क्या होता है कि आपके पास ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में कई ऐसे कोर्स हो जाए अपकमिंग मार्केट में चल रहा होता है, नहीं? और वो कोर्स हमें फिर हम लोग सोचे यार हम लोग पीछे कैसे रह गए, तो उस कोर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टम है या हमारा मैनेजमेंट क्या करता है, वैल्यू एडेड कोर्स करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड कोर्स है जो अभी हम लोग इंपोज करने वाले हैं। कम्युनिकेटिव हिंदी, ज्यादातर डेटा जर्नलिज्म की बात करते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम हिंदुस्तान के अंदर क्या है, टेलीविजन हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं आती हमें। और काम क्या करते हैं कि चलो भाई हिंदी चैनल में काम करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में काम करते हैं। तो हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए पब्लिक स्पीकिंग, स्ट्रीट प्ले या क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका कौन सा कोर्स है? वैल्यू एडेड कोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड ईयर में ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग और पीस जर्नलिज्म। आप दोनों में से कोई एक करोगे, बहुत जरूरी है कि क्राइसिस, जब आप कोई भी चीज ऐसी होती है, जब आप रिपोर्टिंग करने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हो, बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी ऑनलाइन पीस जर्नलिज्म की। तो वो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू एडेड कोर्स में आपको एक्स्ट्रा सिखाया जा रहा है विदाउट एनी चार्ज गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट है आपका हमारा न्यूज़पेपर है, और जिसमें आप आर्टिकल सेंड करते हो। यंगस्टर के नाम से ये न्यूज़पेपर है, और जिनके एडिटर हमारे बालकृष्ण मिश्रा सर है। यंगस्टर न्यूज़पेपर, आप सभी BCA स्टूडेंट्स भी आप इसमें अगर न्यूज़ आर्टिकल या कुछ भी आप इनोवेटिव कुछ भी आप राइटअप कर सकते हो, तो आप हमारे एडिटर बालकृष्ण मिश्रा सर का जो ईमेल आईडी है आप सेंड कर सकते हो अपने, और वो छप जाएगा। इसके RNI नंबर है, वो वैल्यू आपका जब भी आप इंटर्नशिप करने जाओगे तो डेफिनेटली है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर मिलेगी। ये एक आउटलुक है यंगस्टर न्यूज़पेपर का, एक ओल्ड और एक करंट हमने रखा हुआ है, दोनों का फ्रंट पेज है ये, तो आप देख सकते हो ये यंगस्टर न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट हमारा टेक्निया टीवी गाइस, टेक्निया टीवी में 9.04 के फॉलोवर्स है, 9.04 के, 9000 फॉलोवर्स हो गया। आप बहुत जल्दी हम लोग 10,000 फॉलोवर्स पे पहुंचने वाले हैं टेक्निया टीवी स्पेशली, और तकरीबन 16 के हमारे वीडियोस हैं टेक्निया टीवी के अंदर, तो बहुत ही पावरफुल है।
और अगर आप लोगों को सपोज करो लाइब्रेरी कई बार आप लोग को जाना चाहिए, अगर इनकेस नहीं जाते हो, टेक्निया टीवी गाइस एवरीवन, बीसीए और बीजेएमसी, अगर आप लोगों ने विजिट नहीं किया आज ही विजिट करो, सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सारे टिप्स आपको टेक्निया टीवी पे मिलेंगे, बहुत कम टाइम में, बहुत ही अच्छी चीज है। और अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना टेक्निया टीवी को। दिस इज रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि और स्टूडेंट्स आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो, टेक्निया टीवी में कोई पैकेज या कुछ भी बनाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप हमारे अमित सर से डायरेक्ट मिल सकते हो। अमित सर टेक्निया टीवी चार्ज हैं और वो टेक्निया टीवी को देखते हैं, तो अमित सर से डायरेक्टली मिल सकते हो। इवन जर्नलिज्म स्टूडेंट और साथ में अगर बीसीए स्टूडेंट भी कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो सर से मिल सकते हैं। और हमारे लाइब्रेरी में आप जाओ, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक हैं, नंबर ऑफ लिस्ट बुक हैं, यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। गाइस न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, हैबिट डाल दो न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट, हिंदुस्तान टाइम, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, फाइनेंशियल, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, द इकोनॉमिक्स टाइम, ट्रिब्यून, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस और नवभारत टाइम्स, बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे और वो आप रीड करो। जर्नलिज्म एंड मास कॉम स्टूडेंट, जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे लिखते हो PLZ करने में, उतना टाइम इसमें पढ़ो तो बहुत ऑथेंटिक होगा। बहुत सारे बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स, आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे बहुत सारे बुक हैं, वो बुक को पढ़ सकते हो, चाहे रिपोर्टिंग पर हो, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, न्यूज एडिटिंग से रिलेटेड बुक्स हो, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड बुक हो, रेडियो से रिलेटेड बुक्स हो, या किसी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक हो, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हो, हेल्थ जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक हो, कोई ऐसी बुक नहीं है जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं है। और अच्छे पब्लिकेशंस की बुक हमारे लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। यूजीसी से रिलेटेड हो या स्कोपस जर्नल हो, ये सारी चीज, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल, मैगजीन, और आपको ये सारी चीजें टेक्निया में मिल जाएंगे आपको। और गाइस इसके अलावा हम लोग क्या करवाते हैं, आपको ग्रूमिंग के लिए क्या करवाते हैं बीजेएमसी स्टूडेंट, गाइस ग्रूमिंग के लिए क्या करवाते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं ना। अच्छा चलो एक चीज ध्यान से सुनना, वर्कशॉप, सेमिनार, गेस्ट लेक्चर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और साथ में हम लोग कराते हैं मीडिया फेस्ट। वर्चस के नाम से आप लोग पता है कि मीडिया फेस्ट होता है बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, और अप्रॉक्सीमेट मोर देन 100 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट और कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कितना ग्रैंड होता है ये, तो ये चीजें आप देख सकते हो। और बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अनुगुंज के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो और आप लोग के ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी है। गाइस कुछ ग्लिम्पसेस है जो हम सेमिनार, वर्कशॉप या वेबिनार कराते हैं ऑनलाइन, तो उसके कुछ ग्लिम्पसेस है जहां पे हम लोग इस तरीके से करवाते हैं वेबिनार, चाहे ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या प्रिंट जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से हो तो हम लोग करवाते हैं। और ये देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये प्रोसीडिंग है, जब ये पब्लिकेशन है और पब्लिकेशन हम लोग करवाते हैं। अगर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर स्किल से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर स्किल से रिलेटेड ये सारी चीजें, अगर आप कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई सर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए TNP सेल आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो, और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट बहुत जल्दी आने वाले हैं। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट देखना, बहुत सारी कंपनीज आपके यहाँ पे टेक्निया में आएंगे और उसको आप एक्सेल कर सकते हो, बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो गाइज उसके लिए जो ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट TNP के अंदर, वो देखो जो हमारे वेल नोन फेसेस हैं, वो और वेल नोन कंपनीज जो है वो आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफ कैंपस करवाते हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज आए दिन हमारे यहाँ आते रहते हैं, सेलिब्रिटीज, उसके ग्लिम्पसेस देख लो। वर्चुअस मीडिया फेस्ट हुआ था, उसके ग्लिम्पसेस है। सो गाइज दिस इज द आउटलुक अबाउट द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया है। तो एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में ये कहूंगा मैं, मानकर नहीं जानकर देखो, खुद को पहचान कर देखो। मानकर नहीं जानकर देखो, खुद को पहचान कर देखो। ये नहीं, खुद को पहचानना का मतलब हो जाता है सेल्फ एक्सपीरियंस, राइट? तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। और थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। Now I request Dr. Deepak Sonkar, HOD BCA, to give the glimpse of the new semester to BCA students.
I would like to welcome Dr. Ajay Kumar, Director Sir, Dean Sir, Dr. Raman Jha, Training and Placement Head, Dr. Nivedita, faculty members and students. Welcome to you induction program of BCA department, and also welcome for the BJMC students. मैं बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज मैनर में आपको थोड़ा सा इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करूंगा। एम के बारे में तो सबने बता ही दिया कि एम क्या होता है, आपका लाइफ का एक गोल होता है, उसको अचीव करना होता है, ठीक है। तो बीसीए स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है मास कम्युनिकेशन और बीबीए डिपार्टमेंट से, कि उनका जो एम होता है, एक कंप्यूटर में जब तक हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जब तक आउटपुट नहीं आता तो हमारा आउटकम नहीं आता। जब तक हमारा आउटपुट नहीं आएगा हम उसको रिकॉल करते रहेंगे, लाइक सी प्रोग्रामिंग या किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग को हम रिकॉल करते रहते हैं जब तक हमारा आउटपुट नहीं आता। तो ये हमारा जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है कि बीसीए करने के बाद बेसिकली आपका क्या आउटकम निकल के आता है, आप क्या अचीव करते हैं, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। मिशन है आपका, मिशन के बारे में भी आपको पता ही है कि आपका जो मिशन है वो टारगेट का अगर अचीव करेंगे तो आपका एक मिशन अचीव होगा। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होता है। जैसे आप आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर कोई बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ गोल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स, देन यू हैव टू फॉलो दोज प्रोटोकॉल्स। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, ये आपके ऐसे लर्निंग आउटकम हैं जो कि आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट होता है तो उसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट है, ये 8 एट्रीब्यूट्स बीसीए स्टूडेंट्स के अंदर ये होने चाहिए। नॉट बीसीए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जिसमें से आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं उनका किस तरह से यूज़ करते हैं, टेक्निकल स्किल्स, डोमेन अवेयरनेस, ये 8 मेन बेसिकली आपके लर्निंग आउटकम्स हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द बीसीए अ स्टूडेंट शुड बी हैविंग दीज मिनिमम दीज 8 एट्रीब्यूट्स। सिलेबस आई थिंक आप सबके पास है, और अगर किसी के पास नहीं होगा तो आई विल शेयर। First of all, I would like to tell the course curriculum about the 4th semester. In 4th semester आपके जो core courses हैं, BCA 202 Java Programming, BCA 204 Software Engineering, 206 Entrepreneurship Development, ये जो आपका डिसिप्लिन DSE 2 देख रहे हैं, DCE 2 देख रहे हैं, दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ओके, इसमें से आपका जो सब्जेक्ट ऑप्ट हुआ है वो है बी कैट, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, और जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सेकंड है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट। तो आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स we have opted and we will continue with the introduction to data science and its lab. In 4th semester आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है और बेनिफिट है कि आपके जो 4th सेमेस्टर हैं उसमें जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं दैट इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट्स, आपके थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरी तो आप किसी को भी आ जाएगी, बट अनटिल अनलेस इफ यू विल नॉट इम्प्लीमेंट द थ्योरी इनटू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो 4th सेमेस्टर में आपके मैक्सिमम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपका एक मेन बेनिफिट है। 6th सेमेस्टर का जो कैरिकुलम है दैट इज अकॉर्डिंग टू द 2011 एंड 12 सिलेबस, जो पुराना सिलेबस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो 6th सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट्स हैं आपका डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, लाइनक्स एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लाइनक्स लैब, मेजर प्रोजेक्ट और सेमिनार। जो मेजर प्रोजेक्ट है उस पे आप लोग, आपने जो माइनर प्रोजेक्ट करा था उसी को आप कंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक अ न्यू प्रोजेक्ट, द फैकल्टी मेंबर विल हेल्प यू। आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आप अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव अ बेसिक आइडिया हाउ टू मेक अ माइनर प्रोजेक्ट
और मेजर प्रोजेक्ट को उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि टोटल 160 क्रेडिट हैं। फॉर द BCA डिग्री आपको भी 150 क्रेडिट्स चाहिए ही चाहिए पूरे BCA कंप्लीट करने के बाद। फर्स्ट ईयर में आपके 26 क्रेडिट हैं, सेकंड ये सेमेस्टर वाइज क्रेडिट हैं, तो आपके ऑड सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट हैं 80 और इवन सेमेस्टर में टोटल है क्रेडिट 80। तो टोटल आपका जो पूरा 6 सेमेस्टर का बनता है दैट इज़ 160, उसमें से आपको ग्रैब करने पड़ेंगे 150 क्रेडिट्स। अटेंडेंस स्टूडेंट्स बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है जो आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं करेंगे तो आपको पता है कि कॉल कहाँ पे होगा और किस तरह से फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। वैसे BCA स्टूडेंट से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 70 to 80% अटेंडेंस रहती ही है स्टूडेंट्स की। कुछ एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है, मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही प्रोजेक्ट करें, आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं जिनको लाइव करा जाए, लाइव करके उसका जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश आप ये करिएगा, स्पेशली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का आपको क्राइटेरिया पता है कि आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, 75 आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, 25 आपके इंटरनल होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, तो 25 इंटरनल मार्क्स होते हैं और फिर रेस्ट 15 मार्क्स उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ग्रैब करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 वो ग्रैब करने पड़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। मूक कोर्सेज हम लोग चलाते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हमने रन करा था, थर्ड सेमेस्टर में। इस बार हम सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मूक कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपका एक बेसिकली एनहांसमेंट ही होता है कि आप एक एक्स्ट्रा कोर्स अलग से कर सकते हैं जिसके क्रेडिट होते हैं, एंड दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर करिकुलम। वैल्यू एड कोर्स, जैसे सर ने बताया कि वैल्यू एड कोर्स क्या है कि सिलेबस से हटके, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, यू हैव टू बी प्रोवाइड, मतलब इंस्टीट्यूशन, द डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड अ सब्जेक्ट जिसमें कि आपका इंडस्ट्री डिमांड के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर आपको ट्रेनिंग 30 आवर्स की प्रोवाइड कराई जाती है। तो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए जो हमने स्टार्ट करवाया था एंड्रॉयड ऐप, वो आपका कंटिन्यू रहेगा फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में विद पाइथन। टेक्नोविजन का जो डेट है वो टेंटेटिव जो हमने फाइनलाइज करा है दैट इज 13th ऑफ अप्रैल। तो मुझे स्टूडेंट से कोऑपरेशन चाहिए और फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलकर इसको एक हम सक्सेस इवेंट क्रिएट करेंगे। मिलेगा आप लोगों से? आवाज़ ही नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। ये आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं। आई थिंक ऑल ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स आर फेमिलियर विद यू। सिर्फ एक जो नए फैकल्टी मेंबर्स हैं, मिस सरिता नेहरा, ये सिर्फ फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन मिस सरिता नेहरा ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, और मिस्टर अभिषेक सर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन करा है। तो ये भी डिपार्टमेंट का पार्ट है। टाइम टेबल जो है आप लोगों का ऑलमोस्ट क्रिएट है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी शेयर वेरी सून टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Now I request Dr. Ruchi Srivastava, event in charge, to brief the students about various clubs. I know everybody has completed their odd semester and now they have come forward for the new challenges and the learning opportunities in the event semester. Correct? See what happens when you move in the corporate sector. Whenever you move in the corporate sector, or any multinational company or a national company is coming for a campus recruitment, what they look in a candidate.
what they look in a candidate. Not only academics, but there are various parameters which is looked in a student. एक जब कोई भी कंपनी हमारे में आती है तो आगे ये नहीं कहती है कि मैम आप हमें 92%, 98% या रैंक होल्डर्स को भेजिए. ये जॉब प्रोफाइल है, एंड आई वांट अ कैंडिडेट हु हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, a candidate who can speak very well, a candidate who does not feel shy, a candidate who has a very good interpersonal skill, यानी अच्छी लोगों के साथ मिलके काम कर लेता. These are the basic things which they look, and plus the content. उसको अपना content भी आना चाहिए. This is what a company is looking for in any candidate besides the academic achievements. Correct? And now the question arises how these things have to be enhanced, how these things have to be developed. See, the new education policy which is being formulated in 2020 has the focus on the extracurricular activities. Extracurricular activities which is focusing to develop the soft skill in a person. In our Tecnia Institute of Advanced Studies, TIAS, where you are lucky to be a part of it, we have a 14 clubs. And I am working as the in charge, as the head of all these 4 clubs. हमारे पास 14 club हैं, और इन 14 clubs में we conduct various activities like debate, like group discussion, like donations, like collage. There are various activities जहाँ पे अपना student अपनी capabilities, abilities को बहुत अच्छे से showcase कर सकता है and can develop and sharpen and polish their skills. To begin with, the first club is the NSS club. The first club is this NSS club. I believe since you are an old student, so how many students are aware about the clubs? Because very good. I could see many students are active participating, but there are some students I have to generate the energy in them so that they also become active. We don't want a passive student. We want an active student who can come as a volunteers. So I would request all the students to be focused on these clubs. अपना इंटरेस्ट जानिए, बहुत सारे क्लब है, उसमें एज अ वॉलंटियर कम फॉरवर्ड. द फर्स्ट क्लब इज NSS club. And who is the nodal in charge? I want the answer from your side. Who is the nodal in charge? Vaishali Prasad ma'am. Vaishali Prasad ma'am, she is being located at the management department. This is my observation कि normally what is happening कि BGMC का बच्चा उस nodal in charge के साथ ज़्यादा close महसूस करता है जिसके वो department में है. It is do not confine yourself to any department. Clubs is for everyone. आपको कोई भी एक्टिविटी में जो NSS क्लब कराएगा, NSS क्लब आपकी as a name indicate, this is the national service scheme. Many extension activities like the blood donation campaign, like Beti Bachao, like Nukkar Nataks, these are the activities which is being conducted under this banner. These are some, you can see the pics where the students, you all have really actively participated, but I don't want this few number, I want this numbers to be enhanced, to be increased. So clear with the NSS club, who is the nodal in charge? Vaishali Prasad ma'am. Second is Red Ribbon Club. Red Ribbon Club, the nodal in charge, the club in charge is Dr. Shinu Arora. She is from the management department. I think everybody know where is the management department. Where is the management department? If you have to interact with the nodal officer, yes? Yes, PG office, 3rd and the 4th floor and the 1st floor. Faculties are available. You can interact with them if you are interested. Not if, you have to be active for these activities. Red Ribbon Club जो है, वो NSS के साथ combinedly काम करता है. कोई भी activities which is related with HIV awareness, related with blood campaign, these activities are being conducted by these clubs. You can see it out. Stop Domestic Violence, Happy International Youth Day. It has been, see, posters are all being created by the volunteers of students only. Unnat Bharat Abhiyan, UBA cell.
Who is the nodal in charge? Nodal in charge is Rajneesh Pandey sir. Unnat Bharat Cell, ये हम दिस इज बीइंग गवर्न बाय दी रजनीश सर. हमने यहाँ पे 5 गांव को अंडरटेक किया है. 5 गांव जिनका इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट इज बीन अंडरटेकन बाय द टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज. हमारे रजनीश सर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द BJMC डिपार्टमेंट, ये वहाँ के प्रधान से इंटरेक्ट करते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे जाके करवाते हैं फॉर द वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ दैट विलेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल in the rural areas, people are not aware about the hygiene factors. They are not aware about the government scheme like the Ujjwala Yojana. They are not aware कि किस तरीके से हमें मिलना है. So ये acquaintance के लिए sir takes a personal efforts. He goes to the village. He doesn't go alone. I repeat, he is going with the volunteers of the student. जहाँ पे जाके उन्होंने girls के से related बेटी बचाओ का उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक भी करवाया. वहाँ पे डेंगू अवेयरनेस की एक्टिविटीज कराई. And this was successfully conducted beautifully and successfully because of the support of the students. So I would request all the students, whether they are of the BGMC, whether they are of the BCA, they should also give their voluntary representation and join the UBSL, because this is the activity which you are doing for the society. सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस में पढ़ के आप नहीं सीख सकते. यू कैन नॉट लर्न CSR simply reading what is the CSR, what is the business ethics, unless and until you practically imbibe in your personality. जब तक वो चीज़ आप खुद नहीं करेंगे, and you will really feel जब आप किसी गरीब आदमी को पुराने कपड़े देते हैं, he is so, he is so कृतज्ञ, he is so obliged to you. So that feeling can only come when you move ahead and come forward and join these cells like UBA, like NSS. See, this is some practical pictures. You can see your Rajneesh sir is interacting with the sarpanch of the rural areas. Then we have the Fit India Club, which is also be bifurcated into NSO, and club in charge is your class teacher, BGMC class teacher, that is Nitin sir. I think everybody loves sports. Everybody loves sports. This club conducts indoor games as well as the outdoor games both. बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि आपके कैरम, आपका बैडमिंटन, आपकी योगा, आपका मेडिटेशंस, ये सारे क्लब्स इसी all such activities are being conducted in this category, so that you are conscious about your fitness, about the healthiness of the body, healthiness of the mind. This can only come when you are a part of the Fit India Club. This club also keeps on organizing such activities where you can actively participate. Who love the sports, please come forward and join this club and interact with the Nitin Yadav sir. You can see such activities, running, yoga. This is Electoral Literary Club, which is being looked by Miss Priyanka Singh from the BGMC department. Your mom is there. She is very active in this club. What is the purpose of this club? The purpose of this club to establish, to sensitize students about the electoral rights and the electoral process of registration, voting through interesting activities and the games. I think all the students are above 18 years, right? If I ask a simple question कि 18 साल से आप सब ऊपर हैं, कितने बच्चे जाते हैं voting के लिए? तो hardly I will have, see, only few hands have come up. Few hands have come up. Voting is the right of every individual because you are selecting the government. The right government, you are the future of a country. But बहुत सारा बच्चा voting के लिए नहीं जाता. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका voting card भी नहीं बना हुआ है. आपकी जो मैम है, she keeps on organizing debate, ballot bistro, discussion, group discussion, and sensitize the students why voting is important, how voting is contributing to the economic growth of a country. This is very well done by the ELC ma'am, that is Priyanka ma'am. Next is Ek Bharat, Shresht Bharat. This is again a very nice club which is being looked by the Soumya ma'am. She is a BCA faculty.
And the initiative, देखिए जितने भी clubs हो रहे हैं, they are being controlled and governed by the UGC norms, by the government government's side also. EBSB भी एक ऐसा ही initiative है जो कि हमारी सरकार द्वारा लिया गया है. यहाँ पे what is the objective of this club is that कि we have एक भारत श्रेष्ठ भारत. एक भारत मतलब you can see India is bifurcated into various language. कहीं हम हिंदी बोलते हैं, कहीं हम उड़िया बोलते हैं, कहीं हम तमिल बोलते हैं, but still we are Indian. तो how we should connect a feeling. North East की तरह हमें ये feel नहीं करना कि we are not a part of the India. So how this concept, Modi ji has brought, our respectable honorable Prime Minister has brought this concept, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ पे टेक्निया को जो इंस्टीट्यूट अलाइन किया गया है, that is the Sikkim. Which state? Yeah, want the answer from your side. या सिक्किम. Why this is aligned? So that you become a close to each other. वहाँ के बच्चे आपकी सौम्या मैम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराती हैं जिससे आपको सिक्किम के बारे में पता चलता है कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर. सिमिलरली जो हमारा स्टेट वहाँ पे अलाइंड है वो बताते हैं अबाउट दी दिल्ली. So that we are not bifurcated, हम अलग अलग नहीं है. The concept of EBSB, इसमें ma'am conduct various cultural activities. You can see it out. And the next is Eco Club. I would like to welcome Sandhya ma'am. As ma'am, please a warm hand of applause. Yeah. Okay, welcome ma'am. Now Eco Club, as the name indicates, this is something which is promoting the environmental awareness about the section of the society. आज everybody is running for money, nobody has a time for themselves, what they are going to look after the environment. Environment is very, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, हमारा pollution का level has been increasing, which you are seeing in the newspaper. This awareness has to be created. कभी कभी कहते हैं ना, आदमी को याद नहीं रहता. एक छोटी सी कहावत है, my father used to say कि बेटा एहसान करके भूल जाओ. मैं मम्मा पापा को मैं अपने बोलती थी, now he is no more, कि पापा एहसान करके भूल जाएंगे तो वो तो कभी याद है, मुझे बीच बीच में उसको याद कराना पड़ेगा कि मैंने ये एहसान किया. You should be obliged. तो similarly this is what is happening. Environment is giving to us, but we are forgetting the contribution from the environment कि हमारी अच्छी ऑक्सीजन, हमारे pure organic food we used to get is depleting day by day. Excess of pollution is increasing, and which is being suffered by a small babies having the asthma. So this club is focusing on this cleanliness drive कि पेड़ लगाओ. बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैम कराती हैं आपकी सानिया मैम. पेड़ लगाओ, आपकी यमुना इतनी गंदी हो रही है. It's very, she takes the students and make them realize that it has to be kept clean. She sensitizes the students, not to the students, but to the nearby society also about the awareness about the air pollution. So this club is looking for the eco-friendly activities. If any students is interested to give the contribution as a volunteer, they may join the Eco Club. Next, we have a Gender Champion Club, that is which is being looked by Dr. Rajni Vyadama from the Department of BAJMC. And what is the objective of Gender Champion Club is to make the young boys and girls gender sensitized and create positive social and values to the girls and their rights. बहुत सारी activities हम girls से related करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी women empowerment. Yes, these are some equality of the women's, but this is not only confined, this Gender Champion Club is not only confined for the volunteers of the girls. Here all the boys can also participate, and various activities which is being conducted, you can join it. Women's better decision making, extension activities on cleanliness, short play on Dahej Hatao. These are some activities which are being recently conducted by this club. Next is Photography Club.
बहुत सारे सी जर्नलिज्म के बच्चे हैं आप लोग. आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग दी सम स्किल ऑफ द फोटोग्राफी. किसी की अच्छी फोटोग्राफी होती है, किसी का कुछ होता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू ज्योति मैम. Literary club. Literary club, many students have the habit of writing, writing the poems, writing the articles, writing the skills. ये सारी जितनी भी आपकी abilities है writing से related, you can participate and you can contact to BK Mishra sir. आपके articles यहाँ पे publish होते हैं through the Youngster magazine. Next is the Happiness Club. Happiness class, which is looked by Dr. Neha Gupta. She also conducts many activities which you can participate. And the most interesting and the most desired club, which is normally what have been seen among the students, is the dramatic club and the dance and music club, which is being looked by the Sonia Batra ma'am. This club is also looking after the Varchasva. Jitne bhi solo singing, dance, RJ hunt, these all are activities, nukkad natak, kisi bhi bachche ka koi bhi interest hai, they can join these clubs. And the last is NCC club, which is looked by the Dr. Suhail sir. He is also from the BJMC department. So I think everybody is clear about the 14 clubs. How many clubs you are having? You can join any club or two clubs. It's not mandatory that one student can join the one club. He can wish, he can join 2 to 3 clubs. Now the question arises how you get the information. See, normally this information is being circulated through your class in charges. अगर कोई information आपके पास timely नहीं पहुंचती है, I am available at the first floor where you can directly contact me. Plus, whenever any flyer or information being circulated, the nodal in charge name is there. ये list भी आपके HODs को provide करा दी जाएगी so that you can actively participate. In this semester, in the event semester, academic has given a separate period, TTS. कुछ क्लब्स आपके एक्टिव रहेंगे ट्यूसडे को, कुछ क्लब आपके एक्टिव रहेंगे थर्सडे को, कुछ क्लब रहेंगे आपके सैटरडे को, वेयर यू कैन पार्टिसिपेट. एंड आई बिलीव, या स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि कैंटीन से बेटर प्लेस है क्लब्स. I am very much sure where you can learn, enhance your abilities. Clear? Thank you so much, Vicha. I would like to request Dr. Ajay Kumar, Director TIAS, to welcome Dr. Sandhya Bindal, Vice Chairman, Tecnia Institute of Advanced Studies, with a bouquet of flowers, please. I would like to call Dr. Nivedita, Head Training and Placement Cell, to address and make the students aware about Training and Placement Cell. So warm welcome in this induction program, and I'm sure that this coming 6 months or the next semester, second, fourth of your this program is going to make you more mature, more developed, more responsible. I have seen the presentation of the department, and what I could visualize from the presentation, that the faculty, mostly they are UGC or NET qualified, if I'm not wrong. Yes, sir? So with this, you can understand the quality of the teaching staff which the college has. After seeing the presentation of Dr. Ruchi, I was sure that the number of club and the number of activity which the college is giving you, and if you are participating, then definitely you are going to rock the world. So with this word, I, Dr. Nivedita, welcome you all here. And I also like to extend my deepest thanks to the organizer of this induction program. My sincere thanks to Director Sir Dr. Ajay Kumar, Professor M.N. Jha, Dean Academics, HOD BAJMC Dr. Shivendi Roy, Dr. Gopal Thakur, HOD BCA Dr. Deepak Sonkar, Dr. Aarti Bajaj, and most important, our Vice Chairman, Madam Dr. Sandhya Bindal ma'am. Thank you so much for gracing this occasion here.
If you talk about training and placement cell, I have been working here for the past 7 years. And these 7 years have made me more mature, have taught me so many lessons that every year I am trying to put my learning and my experience to bring something new to you so that I can be at the best of services for you. So, with a vision of fostering students with relevant and conceptualized professional and human skills to make global leaders and a mission of achieving 100% career progression either in job, higher studies or business, the cell is continuously working on the targeted goals and agenda of enhancing job competencies, employability skills, to maintain a strong industry institute relationships, fostering entrepreneurship, and promote and guide the desirous and prospective students toward higher studies and research. This has become more so important due to the progressive government under the strong leadership of our Prime Minister, that we are supposed to promote research, consultancy, and entrepreneurship. We are living in the world, in the new India, wherein Make in India and Strong India, these are the concepts which government has already put forwarded. Now, the cell has striving to work for all the students, for all the program, to make them a thorough citizen, to lead the world in sync with the growth of the new India under the strong leadership of the progressive government. If you talk about the training and placement cell of Tecnia Advanced Studies, the institute through itself has a well-defined placement policy, internship policy, innovation and entrepreneurship policy, and you can very well see all these policies. It is available on the website of the Tecnia Institute of Advanced Studies, wherein the goal, the agenda, the objective of these policies and how it is going to help the students has been delimited. Now, if you talk about the cell is working on 3 segments. One is training that involves in-house or resourced from industry and academia, and the training involves on soft skills, personality development, career development, corporate orientation, presentation skills, communication skills, and this is done largely by lectures, workshop, guest lecture, debates, group discussion, visits, projects, live internship, etc. And the important part of training is the internship, which is an integral part of curriculum. The second aspect of training as placement cell is of course, is placement, where the cell is continuously arranging campuses and maintaining a strong relationship with the industry. And the third segment where the cell is working is the alumni, and as of now, a strong alumni network has been maintained, and because of the alumni network, the institute through its cell is getting lots of support, and most of the alumni, they love to work for their alma mater as well. And I am sure that after passing here, the 3rd year, after passing from this college, you will also turn back and of course will contribute to the growth of the institute. If you talk about cell, that how it is working, then the cell works through student placement coordinators, faculty placement quarters, and then the training and placement cell. Every year, we ask the student to come forward to volunteer themselves for becoming student placement coordinator, and then based on their their candidature and based on the small elections also taken place, and then we normally take few students in the training and placement cell as a student placement coordinator. And normally, if you are working smartly, working efficiently, then at the end of the year or the end of your program, we are going to appreciate you also by giving you an appreciation certificate for becoming student placement coordinator. Now, let me give you a very brief look at how we are doing it. Once you are inside this campus, from the very first day, once you take the admission,
we try to find out what is your career plan. And based on your career plan, we develop certain training program so that upskilling, reskilling is done on a continuous basis so that the required competencies and skills are there in you when you are going to use those skills after passing out from this campus. So when you talk about the training program for higher studies, what we are doing, that TNP cell is normally organizing sessions to guide you that what are the options after completing your graduation or postgraduate program from Tecnia, where are different universities, if you are looking for something in India or abroad, how you can get the admission, what is the scope of after doing that program also, and then what are the different competitions which you should be appearing, how to prepare for those competitions, like those competitions, CAT, CMAT, GRE, GMAT, IELTS, PT. We are also trying to have session wherein you can be guided for competitive exams like those for CA or for IAS, PCS or civil services as well. Now, when it comes to entrepreneurship, we are always conducting session to motivate you to come for having your own business or contribute significantly to your family business, and an environment has been created in the institute where entrepreneurship mindset can be fostered. And for this, we have already developed a pre-incubation center. And in case you want to understand that what the center is and how it can be helpful to you, you can always come and talk to your faculty placement coordinator, you can talk to your student placement coordinator, and you can also talk to me directly, and you can find out that these are the facilities which the institute is giving in case you are looking to have your own venture or you want to add something new to your family business, already running business, right? Now, when it comes to placement, this is the something which is my bread and butter here in this campus. So I put my maximum effort plus placement only. I normally, or the TNP cell through institute normally brings the company, share their job description to you and ask for your consent. We organize various types of campuses, in campus, on campus, pool campus, off campus. But then it is always once you have shared your consent that for this particular profile, I am fine and I am sharing my candidature. So once your consent is there, taken, then we normally fix a campus process and wherein you are supposed to go for the process. Here, my only suggestion here is that because I am putting my maximum effort for the placement, and what I have observed for the past 7 years, that students at time of giving their consent to the training and placement cell for a particular job profile do not go in detail about the company or the job role. And you apply because your friend is applying, or you apply because I want to go for a, no, madam, I just wanted to have a practice. मुझे देखना था कि interview में क्या होता है, मैंने सिर्फ इसलिए apply कर दिया, something like that. So these excuses, please do avoid these excuses. You should be very thorough and very professional and very sincere. Please go in detail about the job description, about the company, work on it, and then only apply to it. And this rule applies same when you are going for an interview as well. Read about the company, understand the job role, understand the company's vision, mission. Try to understand whether that vision, mission is same as what you are thinking about yourself, and then probably prepare yourself, prepare a good resume, understand your resume, be prepared to answer every question and be prepared to negotiate your salary as well. And this all will happen only when you will read the job description in detail and about the company profile. If you are thorough about job description and company profile, then only you can negotiate about yourself. I always speak that some of you always say कि madam वो calling वाला जो job profile है we are not interesting. Madam ये calling का role होता है. And I must answer it here that normally what I do from the morning to evening, I always call the company HR and always sell my product. And what is my product? You guys, right? So what I'm trying to say that even I am giving calls every day. I'm making calls 50, 60, 70 calls every day to bring company here.
And this is something which I am proud of also. I love talking to people. I love talking to HR of the company, because after talking to them only, I am going to sell my product and I will be earning. So this is why, I mean, if you are hoping to get some job, please be very thorough, be very sincere. At least read the job description, read the company. In case you are confused that what I am supposed to write in my resume, please go in detail about your job description. You will find good words in the JD itself which you can put in your resume, right? Now, of working these many years and talking to various outside agencies, statutory bodies, and of course the learned faculty members and the alumni feedback has made us to understand that there are certain competencies which are required to work upon. And these competencies we have tried to finalize, right? That communication skill is one such competency, leadership skill and team building is the other competency, interpersonal skill is the other competency. So we have finalized certain skills which we are working to upskill or reskill in our classes. Now these skills, we have identified that there are certain dynamics, and on these dynamics we are working. I have just tried to find, put certain dynamics here so that you can understand that what is our vision, what is the vision of the institute, what is the vision of the industry from the institute, and what is the vision of the alumni from the institute, because this comprises, it has been formulated by taking due consideration of all the feedback from different stakeholders. So this is something which we have come up, and all these dynamics we are trying to put in the calendar, in the timetable, so when you are coming in the classes, we can have some sort of dynamics there, so that your personality is, it is improving, it is developing, and it is maturing. So based on those dynamics and those competencies understanding, we have already planned a calendar. Again, it is available on the website, and where you can find that it is week-wise calendar that we have defined, that in the first week of your session here in this semester, what we are going to discuss, in the second week, the third week, and so and so. And this is the timetable. I request everyone to please write it down, because we are going to meet you on these days to discuss all those competencies, skills which I just showed you here. Right, so these are the days for MBA, BCA, BBA, and BJMC, second and fourth semester, fourth and sixth semester, second and third year. I have just write it down. So we are going to meet you every week in these time, wherein I have already defined that what we are going to discuss in these days. And this is available on the website. You can very well check in the Tecnia website as well. Apart from this year we are also bringing another feature which is called as corporate orientation, wherein industry guys will be coming here and they will be discussing you what at all industry is demand, what at all industry is thinking that a student after passing out, what is the role responsibility they are supposed to undertake. So a brief description from the industry inside, from the industry side will give you an insight that what are the things which I am supposed to prepare. Now, the other important aspect, this is something which are classroom and the other sort of thing. The other interesting part is the internship, and I must tell you, this is an integral part of you. Some of you might have done it also, but internship is something that you should understand that why we are doing this internship. This internship is to make you understand that whether you are able to apply your technical or domain knowledge to your practical world or not. This internship is something which will make you understand out of these many options, what is the best option which suits me. This internship is something wherein you can prove your candidature and you can ask the company to take due consideration about your personality, about your knowledge, about your skill, and offer you a pre-placement offer as well. So this internship is for you to utilize your entire knowledge, skill, your personality to make an impact in the industry, to make an impact in the world at larger size. After doing this internship, what I said, that you will be sure that out of different areas which are available in your particular domain, which area you are most comfortable,
which is the most creative and challenging for you, where you should proceed further, you should progress further to make impact in your life, in your family, in your institute, or in the city or world, whatever you may say. Now, what we are doing, we are talking to various industries, bringing them in for internship. We are tying them through formal MOUs. We are tying them through linkages, and we are requesting them to every year take few good students for internship and offer PPOs. And as of now, I must tell you that this is just understanding that where is this. The compulsory internship part is there. You can see that MBA have to do a 4 to 6 weeks of internship after completing their first year. And you can see the, I've already shared a link, you can see in the website also, what are the norms. Similarly, BCA guys, they have to go 4 weeks of internship training, that too after completing their second year. BBA, 8 weeks after completing their second year. Mass comm students have to go twice. One after completing their first year and one after completing their second year. Every time the objective of internship is different, and the detail is available again on the website and of course in your curriculum as well. And at the same time, this internship is something wherein you are, at the end of the process, you are supposed to report it, you are supposed to maintain a project report. And this becomes very important because you are finally evaluated and you are being marked. Some out of 100 marks are given also. So this is very important thing that you should understand. Now, I have just tried to find out what is the criteria of evaluation of the internship. Only thing is that while you are doing an internship, you have to maintain a daily diary wherein you can put in the observation, you can put in what are the tasks has been given to you. And this is very important because this is one practice which is going to help you in your entire life. I'm sure that whether you are going to work for someone else, like, you will be doing for some job, or you have your own business, maintaining a daily diary is something which makes you ahead of everyone. Even in my campus, I am sure that every faculty member, you come to my room and you will find a register on my table wherein you can see that whatever I am doing every day, I am writing it down. So maintaining a daily diary is a habit, it's a practice, and it should be done by everyone if you wish to become on top of the world, right? So how your internship is evaluated? The teacher or the mentor here, faculty mentor or the industry mentor normally likes to see what is your daily diary says. What are you writing there? Have you done it? Or you are just putting Om Namah, क्या कुछ गणेश वणेश का जो बना देते हो, Om लिख देते हो, फिर पूरी डायरी खाली रहती है. So this is something even the industry guys are looking for. So this is one thing, try to learn it, make it a practice that every day I will be keeping a diary and maintaining something that yes, today I got this was a task which was given to me, I learned this, right? Then how much information you have gathered, how you have put in that information, what is the originality of the thought. आप तो आजकल क्या करते हो, आप वो कॉपी करा लाते हो इंटर्नशिप प्री प्रोजेक्ट, और कॉपी करने की ये लिमिट होती है कि यू हैव नॉट चेंज द नेम ऑफ द कॉलेज ऑल्सो, ऐसा भी होता है. आई एम श्योर ऐसा फैकल्टी ऑब्जर्व करती है, मुझे बताया कि बच्चे ने फैकल्टी का नाम तक भी नहीं चेंज किया है, कॉलेज का नाम भी नहीं किया है. तो प्लीज़ डू नॉट कॉपी इट, मेक इट ओरिजिनल. ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प from all the internship report which are there in the market. Please take help, but do not copy them. Make your original. Be very true, be very honest, because it's a learning stage. In case you are on some mistake, your faculty mentor is there to guide you always. So come forward with your originality. Now I am just listing few names of the industry through which the institute through training and placement has already certain MOUs for internship placement and other activities for upgradation, reskilling, upskilling. These are the companies, there are 38 companies for internship only, wherein the institute has for informal or formal tie-ups. Now just a brief understanding that you should know who is working at your discretion. We have we have Dr. Abhishek is there. Dr. Abhishek is there for Faculty Placement Coordinator BCA. So for you guys, if you have anything you want to discuss with Training and Placement Cell, you are supposed to connect to Dr. Abhishek sir.
And he is the one person who will be sharing all the information from training and placement cell to you. At the same time, he is also taking your suggestion, your problems, your constraints, your achievements, your appreciation to me as well, to the training and placement cell as well. And we have Dr. Shaheen also, yes, Dr. Shaheen. She is the faculty placement coordinator for mass comm students. And so whenever you feel that, yes, you need to discuss something, you can always talk to her. She is sitting with me in the training and placement cell, and you all know that where the cell is, it is in the PG building, 3rd floor. So in case you want to come and you want to discuss, you are always welcome. And these are the faculty members for you guys, wherein you can always discuss your problems, your achievements, and you can also come for one-to-one discussion for any topic, for anything. But I am confused that whether I should go for higher studies or I should go for job. Please come, have a discussion. Let us discuss it one-to-one, and probably we can come a very beautiful answer. And then, madam, I have this one plan. I am thinking of to develop this as a prototype. मैं एक business करना चाहता हूँ. Please come. Let's have a discussion. Let the entire team, director sir, dean sir, vice chairperson ma'am, then chairman sir. I mean, you can talk to anyone, your HOD, your anything. I mean, any problem you come and discuss, and you will find that yes, people are there for you to help you out, to suggest you, to advise you, and of course, to bear your pain as well. Now, just to brief this thing that what we have done. This is student progression for last 2 years. I am just showing a graph here that last 2 years, the number of students progressing for higher studies, higher number as compared to those looking for, going for job or business. And then let's have a very brief outlook about the placement record of the department-wise. This is mass communication for the last year, 22 year. I आपका present किया 10 LPA का highest package Sheg India का आया था. Average was 4 LPA, and these were the major companies which came for 22 passing batch mass comm. And this is a graphical representation where you can see from 2013 passing batch what is the graph, what is the placement percentage of the institute, and the number of companies which the institute has already shared. This is for mass comm. Now the BCA students are there, so I'm just skipping the BBA part and I am coming for BCA. BCA, I must tell you that 22 is the first year when BCA student cleared. For the first batch was cleared in the 2022. The batch was 1922. So earlier there was MCA program. That is why you can see that BCA/MCA, because I am going to show you the 22 passing batches for BCA, but the earlier batches were for only MCA only. So for the last year, if you talk about the highest package was Signet system for 12 LPA. The major companies I have already said. Recently, Wipro also came. We are planning for Hexaware as well. I mean, they have already shared a JD. It is in the process. Infosys, they have stopped taking these year. So last 2 years, they are not taking. Then TCS, they have already shared off-campus process with us. You talk about any big companies, now they are knowing Tecnia thanks to the alumni which are already working in these companies. So I don't have to work very hard for getting this company on board here, because I normally find one or the other alumni working in these companies. Yesterday, a girl came, she was working in EXL, MCA pass out, and she said, madam, I require few candidates. So that is how it is happening. So you talk any good companies, thanks to the legacy of Tecnia, I can get any alumni placed there and I can bring that company here. If you talk about the placement percentage, again for MCA, I have shared a understanding that how the progression has been done as far as placement is concerned. Taking in the due consideration of COVID-19 and its situation, still the institute was able to manage a fairly good placement record in those years as well. So that's all. Just a brief understanding that what are the major corporate collaborators who are coming for placement here. I'm just giving you some of the prides, alumni that I have tried to list it. Some of the alumni speak, and it is available in the video form also, again on the website. So that's all from my side. Thank you so much.
Now I request Dr. Ashutosh Bajpai to brief the students about library and universal human values. At the outset, my gratitude to Honorable Chairman Sir, Vice Chairperson, Director Sir, Dean Sir, for organizing this induction program for second year and third year students. But what's left? I think most of the things has been discussed about academics, about events, TNP, training and placement. Your final outcome is placement, and Dr. Nivita, she has briefed you each and everything about this thing. No, but the most important thing, you cannot pass a class, even LKG, UKG, class 1, 2, 3, without books. Is it possible? बिना किताबों के आप कोई क्लास प्रमोट कर सकते हो? बिना बुक्स के तो बेटा कोई क्लास पास नहीं होती है, नहीं होती ना? The most important thing, that is your library. एक रिसर्च के अनुसार ऐसा कहा गया कि आप जो भी हैं, that is your because of your association, अपनी संगत की वजह से आप ऐसे हैं. रिसर्च ये कहती है कि आप जो भी हैं, आप जिसकी संगत में रहते हैं, जैसे 5 लोगों की संगत में रहते हैं, आप उसके एवरेज हो. अब यदि मान लीजिए मैं अच्छे लोगों की संगत में रहता हूं तो उनका 5 लोगों का एवरेज निकाल लीजिए, दैट विल बी आई. और यदि मेरी संगत जैसी भी होगी, उन 5 लोगों का एवरेज निकाल लो आप. अब यदि आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, इनके जैसा होना चाहते हैं तो आपको इनकी संगत में रहना पड़ेगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप कहेंगे अब्दुल कलाम आजाद तो है नहीं आज की दुनिया में, हम उनसे फिजिकली नहीं मिल सकते, हम आइंस्टीन से फिजिकली नहीं मिल सकते, बट बुक्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो. तो जस्ट एक ब्रीफ कर रहे थे कि लाइब्रेरी कितनी इंपॉर्टेंट है. नो डाउट एकेडमिक्स, इवेंट्स, टीएनपी, all these things are important, but the two major things which I am going to discuss right now, that is your library, and second one is universal human values. And I am grateful to my director sir and Dr. M.N. Jha, Dean sir, for giving me this opportunity to excel myself in these two areas. So you all are aware about Tecnia library. I welcome on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies. यदि आप लोगों ने वेबसाइट देखी होगी तो you will get an introduction, curricular, circulation section, reference section, periodicals, digital library, membership, support services, e-books. All these things are on website. We have more than 47,000 books. 47,000 बुक्स हैं और ये बुक्स आप बच्चों के लिए इशू करा सकते हैं 14 डेज के लिए. हाँ, आफ्टर 14 डेज यदि बुक आप सबमिट नहीं करते हो, देयर विल बी फाइन. दैट शुड बी एडेड, नो डाउट. Beside this, we have digital library, and as far as e-resources are concerned, JGATE, DELNET, National Digital Library of India, previous question papers, e-books, online lectures, all these things are available in library. But if you want to avail this facility, the first and the last condition is you have to visit library. आपको library में आना होगा. And whenever you visit library, I request to make an entry. गेट पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, आप अपनी एंट्री वहां पे कर दो, नाम लिखिए, फ्रॉम विच क्लास, विच सेक्शन, विच शिफ्ट, ऑल दिस थिंग्स. इन टाइम, आउट टाइम, दैट शुड बी मेंशन इन द रजिस्टर. ओके. In JGATE, we have 11,837 number of relevant e-journals, and the login and password is shared with all of you. Similarly, DELNET है हमारे पास, जिसका भी ID password शेयर किया गया है, और you will get a number of research papers, और जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी स्पेशलाइजेशन है, उससे रिलेटेड आपको अबेंडेंस मैटर मिल जाएगा. देन अगेन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों ने किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड ऑन NDL? आई एम श्योर वेरी फ्यू हैव डन इट. कितने लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं NDL का? बेटा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. सिंपली आपको अपना लॉगिन बनाना है एंड यू कैन एक्सेस ए नंबर ऑफ बुक्स. बहुत किताबें हैं, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं. वी हैव ड्रिल बिट सॉफ्टवेयर, ई बुक्स इन मैनेजमेंट, BCA, BJMC, एंड बिसाइड दिस देयर इज ए पीरियोडिकल सेक्शन. एंड न्यूज़पेपर पढ़ना तो ज़रूरी है, ये बात तो बचपन से कही जा रही है,
लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो यू नो बेटर. We have Times of India, Hindustan Times, Economic Times, Hindustan, Punjab. There are so many papers, probably 13 papers, and magazines, Business India, Business Today, that is visible on the screen. These are available in the library. इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. That is free of cost, and this is up to you if you want to avail it. Library membership is of developing library network, that is what Delnet, British Council Library, American Library की membership है हमारे पास. You can avail that facility also. बस मैं आपको लोगों को इससे अवगत कराना चाहता हूँ. स्पेशल केयर ऑफ दिव्यांग्स भी है, इन हाउस पब्लिकेशन वॉल्यूम्स है. हाँ, हमारा यंगस्टर, टेक्निया टाइम्स, टेक्निया जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब हमारे इन हाउस पब्लिकेशंस हैं. And I request all the students, no doubt, most of the faculty members, they are contributing in these in-house publications in Youngster, Tecnia Times. But I'll request all the students to contribute something. आप लोग हर सेमेस्टर में एक पेपर लिख सकते हैं. बाकी सब चीज़ें बताई जाती हैं. एक यदि आज की डेट से भी आप चालू कर दें कि हर सेमेस्टर में हम एक बुक पढ़ेंगे. There are so many books. और ये तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहें तो भी किताबें कम नहीं पढ़ेंगी. एक अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना लें कि मैं हर 6 महीने में एक किताब पढ़ूंगी, मैं एक किताब पढ़ूंगा, और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है. इस बात की गारंटी है कि यदि इस हैबिट को आप लागू कर लें तो बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में. कैरियर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अभी डॉक्टर निविता शी वाज डिस्कसिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, लेकिन हम लोग भी कुछ सहयोग करते हैं उसमें. वी हैव एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स में कैरियर है आपका, टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट आता है. तो हर बच्चे के पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो एक एक जॉब देखे, लेकिन हमारे लाइब्रेरी सेक्शन में जो स्टाफ है वो रेलिवेंट जॉब्स जो आपके लिए बेहतर है उसको सर्च करके नोटिस बोर्ड पे पुटअप कर देते हैं. दिस इज द इनिशिएटिव टेकन बाय डायरेक्टर सर दिस ईयर. नो डाउट पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस बार और इसको मोमेंटम के साथ में किया गया है. करंट अवेयरनेस सर्विसेज है, सजेशंस एंड फीडबैक रजिस्टर इज देयर. यदि किसी बच्चे को ये कंप्लेन है कि आई एम नॉट गेटिंग दिस बुक, BBA, BCA, BJMC, MBA किसी का भी हो, आपको लगता है ये बुक होनी चाहिए लाइब्रेरी में और बुक अवेलेबल नहीं है, जस्ट लेट मी नो, जस्ट गिव योर सजेशन. ऐसा नहीं कि सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, सर बुक नहीं मिली मुझको. आपने कभी कांटेक्ट किया लाइब्रेरी में? तो बेटा आई रिक्वेस्ट कि ये फीडबैक सजेशन भी दे सकते हैं आप. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइब्रेरी में कौन कौन एसोसिएटेड है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग. तो मेंबर ऑफ लाइब्रेरी कमेटी डॉक्टर भूपेंद्र भारती, you are aware about Dr. Bhupen Bharti is an academician and in the Department of Management Sciences. Okay. Most Honorable Dr. Sandeep Kumar, Professor in the Department of Management. He is Chair Library Committee, and this year I have been given the charge of Head Library. Most of the students they know me. Maximum बच्चा जानता है मेरे को. I have taken class in BCA 3rd semester and BJMC first year also. Besides this, Ms. Shikha Verma, she is assistant library. जो बच्चा लाइब्रेरी विजिट किया होगा मैडम का फेस जरूर जानता होगा. प्रियंका त्यागी, she is library assistant, and Mr. Saurabh Kumar, library assistant, and Mr. Rahul Kumar, library attendant. यदि किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है लाइब्रेरी से रिलेटेड, या इफ यू वांट टू पुट योर सजेशंस एंड एनी फीडबैक, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, और द रजिस्टर इज इन द लाइब्रेरी, यू कैन पुट योर रिमार्क्स देयर आल्सो. ओके, बट योर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू साइन एवरी डे ऑन Delnet and JGate to access maximum number of research papers so that you can contribute in academics. Okay, so AICT in 2018 they have introduced this human values paper in the curriculum of engineering in 2018. UHV2 as essential 3 credit paper as H102. The basic 5 human values are integral part of all religions that are mentioned in
specifically mentioned in NP 2020, and they are truth, peace, non-violence, love, right and conduct, and based on previously identified values in other government reports. And the objective is to give equal emphasis on all subjects, whether it is social science, art, language, sports, mathematics, or whatever it is, as a comprehensive national curricular framework for school education, that is NCFSE 2021, and that will be developed by NCERT. 5 values, truth, love, peace, non-violence, and right actions are the universal human values. हर सोसाइटी में चाहते हैं ये कॉमन वैल्यूज़ हों और ग्लोबल वैल्यूज़ ही हमको एक आपस में जोड़ती हैं. The national policy of education and NP national policy of education was framed in 86. ये थोड़ा ब्रीफ बता रहे हैं आपको, और 92 में मॉडिफाइड हुआ और फिर काफ़ी कुछ चेंजेस होते रहे, रिवीजन होते रहे इसमें. This NEP 2020 कहता है कि education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. एजुकेशन के थ्रू ही बदलाव संभव है, एजुकेशन के थ्रू ही बदलाव संभव है. तो आवश्यक है कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे, और उससे पहले फैकल्टी, उसको भी सीखना होगा कि हमें क्या देना अपने बच्चों को. स्टूडेंट्स को जो देना है फैकल्टी के थ्रू ही दिया जाता है, तो आवश्यक है कि फैकल्टी भी सीखे उस चीज़ को और फिर अपने साथ बच्चों को भी लेके आए उसमें. UHV1 स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम दैट इज मैंडेटरी AICT के द्वारा. अब इसके ब्रीफ में नहीं जाएंगे अभी हम. कुछ बुक्स हैं दैट आई विल शेयर विद यू ऑल. और इसमें कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी का, सभी लोगों का रहा इसमें. In Tecnia, this year, Director Sir and Dean Sir, they have established Center of Excellence. इसको पहले हम UHV सेल बोलते थे, ये इस्टेब्लिश किया गया है. वेबसाइट देखेंगे आप टेक्निया पे तो आपको इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शंस, चेयर कमेटी में कौन कौन है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्टैक्ट लिंक्स, टाइटल नोटिसेज, अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे. यू कैन गो थ्रू योर वेबसाइट. This is a compulsory paper by AICT and UGC also. पहले AICT और ये वर्कशॉप करा रहा था, बट नाउ AICT एंड UGC दोनों ने क्लब करके इसको कराना शुरू किया है. फैकल्टी के लिए 5 डे वर्कशॉप होती है, एंड वी आर वेरी लकी कि टेक्निया में मोर देन 80% फैकल्टी हैव कंप्लीटेड UHV1 एंड मोर देन 20-30% फैकल्टी हैव कंप्लीटेड UHV2 ऑल्सो. AICT UGC स्टूडेंट्स के लिए भी वर्कशॉप कराती है. बच्चा कहता है कि भाई मैं मॉर्निंग में क्लास कैसे कर पाऊँगा, तो AICT ने शाम को 6 से 9 तक क्लास रखी है. 1 वीक का SDP होता है, उसको आप अटेंड कर सकते हो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब बाय AICT UGC, सर्टिफिकेट बी अवार्डेड बाय AICT. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप. अभी प्रीवियस मंथ में मैंने शायद शेयर किया था BCA 3rd सेमेस्टर से, तो बच्चों का शायद वैल्यू एडेड कोर्स चल रहा था, तो आप रजिस्टर नहीं कर पाए थे. बट वेरी सून लिंक विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू, एंड विद दीज वर्ड्स गुड लक, गुड लक. थैंक यू. May I request Dr. BB Tiwari, Chair Management Science, to please contribute on dash please. Thank you. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने जो कुछ चेंजेस किए हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस छोटी छोटी क्वेरीज आपकी क्लियर कर दे रहा हूं कि जब आप कहते हो कि इंटर्नशिप कर रहा हूं, तो इंटर्नशिप का मतलब ये है कि वो क्रेडिटाइज होना चाहिए और वो क्रेडिट आपके एकेडमिक्स में जुड़ेगा. क्रेडिटाइज होगा कैसे? पहली बात तो आप किसी कंपनी में जा करके इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन अपने मन से नहीं. फर्स्ट, दिस इज मैंडेटरी. आप लोगों ने शायद अभी तक ध्यान नहीं दिया, सुना तो होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया. मेरी रिक्वेस्ट अपने प्लेसमेंट हेड से भी है कि इस पर थोड़ा सा आप भी ध्यान दें कि आपको इंटर्नशिप पोर्टल पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करना है.
any internship program you can avail only through the internship portal launched by the government of India. It is mandatory for all the industry and corporate to register and give the internship to the students. इंटर्नशिप अभी तक केवल होता था टेक्निकल एजुकेशन के लिए, लेकिन इन एनईपी 2020 और इस साल से the government has initiated the internship policy for all kind of education, whether it is technical education or it is traditional education. बीए करने वाले भी अब इंटर्नशिप करेंगे। अभी तक टेक्निकल एजुकेशन यानी बीसीए, बीएजेएमसी, बीटेक, इन सब कोर्सेज में एमबीए, बीबीए, ये सब कोर्सेज ही इंटर्नशिप करते थे, लेकिन इस साल से, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं, इंटर्नशिप आपका क्रेडिटाइज तभी होगा जब आप इंटर्नशिप पोर्टल के थ्रू करेंगे, और उसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है? जब आप इंटर्नशिप पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और उस पर जाकर के उसके थ्रू इंटर्नशिप करेंगे तो 1500 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट से आपको आएगा, 700 रुपीज आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, और जो इंटर्नशिप का पैसा इंडस्ट्री आपको दे रही है वो आपका बेनिफिट है। उसके अलावा ये मिलेगा 1500 रुपीज पर कैंडिडेट गवर्नमेंट आपको दे रही है इंटर्नशिप के लिए। तो बेहतर है कि अगर आपको थोड़ा सा पैसा और चाहिए, 2200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या बुरा है आपको? आप डायरेक्ट जा करके किसी कंपनी में कर रहे हो, इंटर्नशिप पोर्टल के थ्रू जाइए, बेहतर कंपनी मिलेगा और आपको 2200 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो इंटर्नशिप पोर्टल के थ्रू जाइए, और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये अपॉर्चुनिटी खोल दी गई है कि नाउ दे कैन बिकम द एग्रीगेटर। एग्रीगेटर शब्द आपने सुना होगा। एग्रीगेटर वो कह रहे हैं कि एग्रीगेटर का मतलब ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्टर कराइए और उसके थ्रू इंटर्नशिप कराइए, तब ये क्रेडिटाइज होगा, और इसी इंटर्नशिप का क्रेडिट तब आपको मिलेगा आपके एजुकेशन में। आपके एजुकेशन के लिए टोटल कितने आवर्स का क्रेडिट चाहिए? इट इज कंपल्सरी फॉर एनी प्रोग्राम टू हैव मिनिमम 20 क्रेडिट, मिनिमम 20 क्रेडिट एक सेमेस्टर में, एक ईयर में मिनिमम 40 क्रेडिट, और अगर इसको आवर्स में हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा कितने आवर्स का? एक साल में 1200 घंटे की क्रेडिट आपको चाहिए। आपके कोर्स सब्जेक्ट के लिए 3 साल में, अगर 3 साल का कोर्स है, जो अभी तक आप गेस कर रहे थे वो गेस वर्क आप दूर कर लीजिए, 3 साल का कोर्स जब है तो 60 क्रेडिट और मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो 40 और जुड़ जाएगा इसमें। मेजर से आएगा ये, मेजर से, मेजर क्रेडिट आपका, मेजर जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, माइनर स्ट्रीम, माइनर और मेजर का कंपोनेंट अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब ये आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जो आने वाला बैच होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, कि अगर आपने टोटल 160, 4 साल का कोर्स होता है तो 160 क्रेडिट है, अगर आपने मिनिमम 80 क्रेडिट अचीव कर लिया है, और 80 क्रेडिट में अभी तक आप फेल माने जाते थे, लेकिन अब फेल नहीं होंगे। अगर आपने मिनिमम 80 क्रेडिट अचीव कर लिया है तो आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी, वो कहलाएगी माइनर। और अगर आपने 160 क्रेडिट अचीव किया है तो आपको ये कहा जाएगा मेजर। तो अभी ये, लेकिन आने वाले जो सेशन है उससे स्टार्ट होगा, जो आने वाला बैच है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बाइफर्केशन है। समर इंटर्नशिप का 2 से 4 क्रेडिट आपका, जो मिनिमम 2 क्रेडिट, मैक्सिमम 4 क्रेडिट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब इंप्लीमेंट हो जाएगी जो आने वाले सेमेस्टर से, तो वो 4th ईयर में है, अभी आपके किसी में 2nd ईयर में है, किसी में 3rd ईयर में है। आप एक जगह पर ध्यान रखिएगा, स्किल इनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, 2 की क्रेडिट
अभी तक हम लोग वैल्यू एडेड कोर्सेज जो आप पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर्स को ही स्किल एनहांसमेंट कोर्स कहते थे। और एक चीज कहा गया, डिफाइन किया गया कि वैल्यू एडेड कोर्सेज आर दोज कोर्सेज विच आर अदर देन द ट्रेडिशनल विच वी आर हैविंग इन आवर ट्रेडिशनल कोर्स प्रोग्राम। अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए में जो प्रोग्राम में आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोर्सेज पढ़ रहे हैं, उससे अदर देन जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहलाता है वैल्यू एडेड, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन अब जो डिफाइन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो वैल्यू एडेड को थोड़ा सा अलग डिफाइन किया गया है। वैल्यू एडेड कोर्स का मतलब होगा कि ऑल दोज कोर्सेज विच आर रिलेटेड टू दीज डोमेन्स, दीज 4 डोमेन्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो फ्रीडम वगैरह आपने कभी नहीं पढ़ा, फ्रीडम स्ट्रगल, ट्रेडिशंस, एंशिएंट कल्चर, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, ये सब आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ सकते हैं। और खास करके डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में बीसीए के लिए स्पेशली है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडेड प्रोग्राम में 3D वगैरह जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इसमें वैल्यू एडेड प्रोग्राम में आएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये 4 मेजर क्राइटेरियाज हैं जहां पर वैल्यू एडेड कोर्स चलाए जा सकते हैं। और स्किल इनहांसमेंट कोर्स जो है वो 9 क्रेडिट का अलग से है। 6 मिनिमम क्रेडिट होगा, 9 मैक्सिमम क्रेडिट होगा। बट स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज आर दोज कोर्सेज विच आर in the alignment of NSQF, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क। जो उसके अलाइनमेंट में नहीं होगा उसको स्किल डेवलपमेंट के, स्किल एनहांसमेंट कोर्स उसको नहीं माना जाएगा, उसका क्रेडिट नहीं होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बी क्लियर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत क्लियर कट से रखा गया है। और NSQF का कोई भी अलाइनमेंट तभी होगा जब कोई कोर्स आप लॉन्च करने जा रहे हो। एजुकेशन पॉलिसी में इसका बहुत 2 लाइन में जो ये लिखा हुआ है इसका लोग इंटरप्रिटेशन बहुत गलत कर रहे हैं। स्किल इनहांसमेंट कोर्स हम कोई भी लॉन्च कर देंगे, कहा गया है कि कोई भी अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में कोई भी कोर्स हम लॉन्च करके स्किल डेवलपमेंट कोर्स हम बना सकते हैं। बिल्कुल गलत है। ये 2 लाइन में जो लिखा गया है इसके लिए कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स मान लीजिए आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं सिंपल सा, कि आप 3D डायमेंशनल कोर्स कोई चलाना चाह रहे हैं, बीसीए के लिए मैं बात कर रहा हूं, या एडवांस एक्सेल का कोर्स चलाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं ये स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है, एडवांस एक्सेल या 3D डायमेंशनल कोर्स। इसको NSQF अलाइनमेंट लाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले 30 इंडस्ट्री के पास जाइए और वहां से लिखवा करके लाइए, उनसे अप्रूवल लीजिए कि ये 30 इंडस्ट्री अप्रूव करती है कि दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माय इंडस्ट्री दैट वी कैन गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स। तब वो NSQF के अलाइनमेंट में आएगा। अदरवाइज वो स्किल एनहांसमेंट कोर्स नहीं माना जाएगा, ना तो उसका क्रेडिट होने वाला है। ये गलतफहमी अगर है तो निकाल दीजिए आप अपने दिमाग से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये गलतफहमी बहुत जबरदस्त है। बहुत क्लियर कट ढंग से लिखा है NSQF अलाइनमेंट तभी माना जाएगा जब 30 इंडस्ट्री, मिनिमम 30 इंडस्ट्री ये लिख करके अप्रूव करेंगी कि ये कोर्स के आधार पर हम बच्चे को नौकरी देंगे, तभी ये NSQF अलाइनमेंट होगा और तभी स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपका अप्रूव माना जाएगा और तभी उसका क्रेडिट आप कर सकते हैं। क्रेडिट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि इवन इफ यू आर हैविंग दैट 7 आवर्स कोर्स, 7 घंटे का कोई कोर्स है और आप ये प्रूव कर दीजिए कि 7 घंटे में ये बच्चा एम्प्लॉयबल है, इस बेसिस पर, इस स्किल के बेसिस पर इसको हम नौकरी दे सकते हैं, 5,000 की नौकरी दे देंगे। 30 इंडस्ट्री अगर लिख करके दे दें तो उसका भी क्रेडिट हो जाएगा, उसका भी क्रेडिटाइजेशन हो जाएगा। क्रेडिट मैनुअल में बहुत साफ साफ लिखा गया है
एनसीबीईटी के चेयरमैन ने बड़े साफ साफ कई जगहों पर इसको बोला है, कई साफ साफ बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, क्रेडिट सिस्टम और वैल्यू एडेड प्रोग्राम को थोड़ा सा बहुत समझ लीजिए। इंटर्नशिप जो आप लोग करते रहे हैं, आपके सिर्फ जा करके सर्टिफिकेट ले लेना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आप इंटर्नशिप के पोर्टल के थ्रू जाइए, उससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। Now may I request Dr. M.N. Jha, Dean Academics, to please come on the stage and address the audience. We have now decided not merely to go for the induction year-wise, but the semester-wise. Every semester it is important for us to communicate lot many things to you all. And tapping that opportunity before the start, we are slotting this program, induction program. I will start with one saying, and you need to add something. कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है is old saying now. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है. And unless until you keep in mind, everything is of no use. What we visualize in the college, बच्चों, you want fruits, you want result, you want success. Without doing work in the root, without root, you simply can't get fruits. आपका कॉलेज आना, आपका क्लास में आना, आपका एग्जाम देना, सारा किसी काम का नहीं होने वाला है in coming years, in coming decades. Future of country. You all are the future of country. चिंता यह है कि मेरा फ्यूचर इस कंट्री का इतना लापरवाह क्यों है? The new policy, what has been elaborated by Dr. BBA is having a lot many good things inside. अब वो समय चला गया कि आप सिर्फ डिग्री लें, कोई मतलब नहीं डिग्री का, कोई मतलब नहीं डिग्री का. शायद आपने लग रहा होगा कि कई सर आए, कई सर जाएंगे, बोलेंगे, ऐसा ही होगा. Unless until you develop skill, आप में अगर स्किल नहीं है, आप में अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, that degree will be of simply a piece of paper, nothing more than that. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. So please do work in your root to have fruits. वो समय चला गया कि चलो one part I am losing, other part I am getting. Sorry, you need to balance. You need to put the best efforts behind. जब तक ये नहीं करेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. And why I have started this thing? Very closely I have seen my students, whether the students are inside the hall or not. It's a very, very important message. You can spread it that you need to put the best so far as skill is concerned. India is doing great. India is moving towards the developed country. And a deadline has been set 2047. And for the developed country, your role is very important. We all are confident by 2047, you all will be at great heights. आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं करेंगे, आपके कंपटीटर दूसरे कॉलेज के करेंगे, दूसरे टाउन के करेंगे, आप देखते रह जाएंगे. You will be loser. So that is the problem. You all are not serious. And same thing happens in the class also. क्लास में आप जाएंगे, पीछे बैठेंगे, सर का डिलीवरी हो गया, क्लास से चल देंगे. You need not to interact with the teacher. Time has changed. When you are in the class, are you asking question to your teacher? Are you? If don't, so there is no use of you. There is no use of that class. Time has changed. You need to interact. And we Tecnia, we are adopting that change scenario now. अब
Now every faculty will call you on the podium. आओ, deliver करो, आओ, lecture दो, आओ, तुमने क्या समझा? And that practice we are going to implement, because the earlier what different colleges and we too had adopted teacher-centric, now it is student-centric. You need to interact. You need to develop yourself. You need to enhance your skill. If you won't have a skill, you won't be in demand. आपका demand बिल्कुल नहीं होगा. However, even today, there are many persons earning 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 per month, and many, they are earning crores and crores. They are doing great. Which way you need to move? Today you need to decide. Are you very serious? Really serious to step up your future? Whether you get a job or you are having your own business, everywhere, sit down. Everywhere it is very, very important, that what skill you have. How much practical knowledge you have. Until you have, you won't be in demand. कभी demand में नहीं आओगे. So there is demand of the competent person. And 3 very important parameters of competency, very important parameter, and this what I am telling is not new, but it is now more relevant. If you have knowledge and you won't have a skill, you might be the great engineer and many years, but you won't be demand. आप कुछ implement नहीं कर सकते. So with the knowledge, you need to develop a skill. Other way, if you have a skill only and you don't have knowledge, you are simply just like the mechanic or the clerk, not more than that. So you need to have the knowledge and skill as well. And third and the most important, that is your behavior, your attitude. Just know what you were doing. You might be a good student. I don't have doubt of that. Just like what you were doing. One started to lecture, one started to deliver, one started to address, you are moving out of the hall. Your attitude, your behavior, how you behave. You might be good in knowledge. You might be good in skill. Still, you might not be in demand because there are many persons who are having the same caliber with better behavior, with better attitude. They will be in demand. You won't be in demand. So, all 3 parameters you need to develop. And there is a very important word for that, ask, ASK. Yesterday or day before, I was addressing the staff development program in our college, and same thing, I started to communicate to our staff as well. Ask, A, attitude, S, skill, K, knowledge. And you do work on that, for which you need to be proactive. आप क्वेश्चन करें अपने टीचर से क्लास में, सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे ये बता दो. आप फैकल्टी रूम में यह कहने के लिए नहीं जाएं कि मैं जाऊं, घर चला जाऊं, आज क्लास नहीं कर पाऊंगा, आज मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, आज मेरा असाइनमेंट नहीं हुआ. If you are not in habit to ask question, you won't develop. How many of you are in habit to ask question in class? Are you? Anybody? कोई है? This is great. If you are, I will not go for the cross confirmation, but I am going on your face value. If you are doing, you're wonderful. Do you get benefit of that? So everybody is required to follow. But some friends, perhaps they are not believing you. I don't know why. But if you are doing, that's great. And it will have the double effect. When you will keep on asking questions to your teacher, teacher will develop, teacher will go to the class with full preparedness. उसे ये आशंका तो होगी कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है. So I need to be well prepared before going to the class. अभी क्या हो सकता है? I'm not sure about that. Some teacher may think about, चलो पीछे का लेक्चर है, वही हम डिलीवर करके आ जाएंगे. So nobody is there to ask me any questions inside the class. So please, this is very important. Do work on your skill, change your attitude, attend classes, be very serious. If you really to believe in, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है. Unless you do it, you simply can't get fruits. Unless you do work in your route, you simply can't get success.
Few more things I need to share. Some of you might think 10,000 का जॉब है मुझे नहीं करना अभी. नहीं नहीं नहीं, अचानक मुझको अगर एक का एक 40-50,000 पर मंथ का जॉब नहीं मिला तो मेरे कैलिबर का जॉब नहीं है, मुझे नहीं करना. बच्चे, माय सिंसियर एडवाइस, लास्ट कॉल आपका. जॉब छोटा हो, स्टार्ट में कॉलेज में जो भी जॉब मिलो, टीएनपी मैम वाज वेरी मच सीरियस अबाउट दैट एंड शी इज कंप्लेनिंग that students, number one, do not turn up in placement activities. Even if turn up and one is selected, do not turn up while joining. नहीं मेरे लायक जॉब नहीं है या मुझे ये जॉब नहीं करना, मुझे तो बस बिल्कुल वही जॉब चाहिए जो मैंने सोचा बेस्ट पॉसिबल. बच्चे प्लीज चेंज योर माइंड. वॉट एवर योर जॉब यू गेट, यू ज्वाइन प्लीज. कुछ नहीं, कम से कम 6 महीना, साल भर, 2 साल आप उस ऑर्गेनाइजेशन का स्किल, इन्वायरमेंट, नॉलेज कुछ तो मिलेगा आपको. दैट इज गोइंग टू गिव यू, गोइंग टू ऐड योर सीवी, गोइंग टू ऐड योर फर्दर एक्सपीरियंस. डोंट लूज दैट. एंड व्हाई वी आर वरीड? वी आर वरीड नॉट ओनली फॉर यू, वी आर वरीड फॉर एंटायर एनवायरनमेंट. अगर कोई कंपनी आ गई, 4 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, 4 में से 3 बच्चा कहता है मुझे ज्वाइन नहीं करना, नेक्स्ट टाइम वो कंपनी कहेगी सॉरी मैं टेक्निया में नहीं आने वाला. इट हैपनिंग. सो मैम इज वरीड, शी इज पुटिंग बेस्ट ऑफ हर, बट शी इज फेसिंग इट. बच्चे टर्नअप नहीं होते. क्यों टर्नअप नहीं होते? अब मैं हाइट बताऊँ आपको. अगर टर्नअप नहीं होते, बच्चों ने खुद से जॉब ले लिया, कुछ कर लिया, बड़ी अच्छी बात है. मैंने कई सीनियर्स को देखा है, दे आर नॉट टर्निंग अप इन देयर ओन टर्न एंड टुडे दे आर बिहाइंड मैम. अब मैडम कुछ मुझे जॉब कहीं कहीं दिलवा दो. अब मैम कहती है कि उसमें क्यों नहीं आया, सॉरी मैम पता नहीं क्या, कुछ करवा दो मुझको. व्हाट इज हैपनिंग? So again, my sincere advice, whatever job you are getting is first instance, go and join. Be part of the process. अगर जॉब नहीं मिला आपको, कम से कम इंटरव्यू का, ग्रुप डिस्कशन का एक एक्सपीरियंस तो आएगा आपके पास. Time has changed. You need to realize what the time is. You need to go with the time. पूरा का पूरा फ्यूचर कंट्री का एंड वर्ल्ड का इसलिए this country is going to be the developed. Especially in the G20 now, India has proved that India is going to lead the world. India कैसे lead कर लेगा world को? India कैसे lead कर लेगा world को? Unless you clap for yourself, have one round of clapping for yourself. अगर India lead करेगा on the basis of my dear students, आपके आधार पर, if you excel, India can excel. If you don't, India simply can't. Thank you. All the best. Thank you very much. I take immense pleasure in calling upon the visionary person, Dr. Ajay Kumar, Director TIAS, for his guidance and general support. Sir, may I please request you to come and address the audience? Those who are staying back are listening, and those who are outside the hall, they are missing. All your stalwarts faculty is working hard to make you people understand how you're going to take shape your future, and in the foremost thing, how you're going to shape India in time to be 2047. This is the clock which is set by our Honorable Prime Minister. You are going to be the responsible citizen in time to come, and you're going to shoulder responsibility which has been there as per your chosen domain. And your professionalism, very important. There should be 100% commitment. There cannot be 99.9%. If it is for BCA students, if you can download a file of 99.9, what kind of file it is? You can imagine? Is it full file or a corrupt file? Corrupt. So there is nothing between 0 to 99.99 is 0 in IT field. Only 100% is performance. Only 100% is performance. So, my dear friend, always try to put in your domain 100%. Never think of 99.9%. This is first thing. If you're a professional, if you're making a program, if it's run together, it's 100%, or there's syntax error, or it's not going to work for you. So think
that everything depends on you and you are the last resort for the country. You're the so important person when you're on the job, when you're a responsible person. Think that life depends upon your perfection. And the transformation which the country is looking forward over here, the whole NEP process, National Education Framework, National Education Process. This is a document you can download, Curriculum and Credit Framework. You can download from UGC site, new mandate for your all programs, how you have to develop yourself. There's another framework, National Credit Framework, September 2022. Download this thing from the UGC site and understand, go for it. You'll come to know what exactly country wants from you. It's a elaborative one. Okay, these two things must factor for you to understand how you have to transform. Lot many things have been told to you. I am going to sum up things for you in 4 words. Only 4 words. And you have to look on, these 4 words are area, A-R-E-A. A stands for academics, your domain knowledge. Say for example, if you're a journalist student, journalism, that means your domain knowledge is journalism. If you're computer application, definitely it's going to domain knowledge is computer applications. Second one is research. R stands for research. Research is your creativity. Creativity. So it is asking you for jobs. If you're interested for jobs, you require skills. But if you want to reach high as a professionals, then you have to have a vision to look out for a career. The difference between a career and a job. So plan for your careers, and job is the first stepping stone for a career. First stepping stone for the career. So after passing out from your program, and if you don't get job within 1 month, it will be quite frustrating for you. Mark my words. अगर आप निकलने के बाद 1 महीने के अंदर आपको जॉब नहीं मिली, समझ लेना you are going to losing confidence on a daily basis. That's because your other students are getting jobs and you're not getting jobs. Each and every hour is going to be frustrating for you because your parents are expecting from you, your peers are expecting from you, your juniors are expecting from you, there is expectation from you. Every passing day, pressure will be on you. She's right. Training and placement is right. We work for that day now. Job is very important for you because that first stepping stone where you taste the success and you do something over there, then you can get a lead on that. So, my dear friends, look out for a career. First stepping stone is a job, and training and placement department, I feel that you've got a faculty development, faculty coordinator. I want to make a team of students who can be able to devise out a strategy for whole class. Number 1, in which domain want to work in the professionals. Number 1, how much job requirement has been there, and tap the exact companies which you require. And there has to be common sync between the students and the FPC. And then we have to target our system. So I feel it that education part is over. Everybody will get a good degree. Our university is now A++. You are getting a degree from a A++ university, NAC A++. So that way you are no more novice in the field or already expert as far as university is concerned. But you must get the jobs. This is our priority, and you have to help yourself in these dimensions. Second thing is learning. Sir has asked you, we have been transforming the learning system. Learning system means teacher-centric approach. We think that you are empty bottles, teacher aaya, blah, 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 and it fill the all bottles. This has gone. This has gone.
approach is now changing. We put up 3 things for you. One, problem solving. Second is the participative learning. And third is your experiential learning. So your topic will be in any of these 3 areas. Either he starts with problem solving approach, or a participative learning approach, discussion and debates and the other things will be taking shape. And lastly is experience learning. Experiential learning means you are going to work on with your own hands and found out your own conclusions. Because India now required evaluators and creators. Creators. We don't want somebody who can understand, remember, analyze or apply. No. They are technicians. They want engineers. So only creativity is the field which brings in different dimensions in you, because it's a knowledge economy now. 2047 is a knowledge economy. And you have to bear that responsibility on your shoulders in time to come. My dear friend, I not will take much of time. Everything has been told to you. What are the gaps over there? I have already posed on with you. And may this session will be able to shape your future in time to come, and you should come out with flying colors in time to come and make your parents and the country proud. Thank you. All the best. Sayonara. Jai Hind. I would like to request Dr. Ajay Kumar, Director TIAS, to welcome Dr. Sandhya Bindal, Vice Chairman, Tecnia Institute of Advanced Studies, with a bouquet of flowers, please. I'm glad to invite Honorable Vice Chairperson, ma'am, Dr. Sandhya Bindal, to address the students, please. It is my great pleasure to welcome you all to our esteemed college. This induction program marks the beginning of your academic year journey with us, and I'm honored to have an opportunity to address you all today. Dear students, all the HODs, members, faculty members, our respected Director Sir, Dean Sir, everyone sitting, Ma'am Nivedita Ma'am, Sir, and all the faculty members who are sitting here, they are working very, very hard. They're working 24/7 for you all, and only for you all. So, in very few words, I would just like to tell you that this is the most important time, the most important phase you are into. I'm not coming up with any script I have written. I just want to take 5 minutes of yours. Decision making. Decision making is a very important thing. Right now, you will not able to decide whether you are doing right or wrong, rather it's terms of your values, your academics, your curriculum activities, your extra activities. You are not able to decide whether what is right and what is wrong for you. For an example, you have taken up an interview where you are into that job of calling, and you think that it's not good for me. And you take a call that day that I'm not doing this job. But that is a very good decision that you are not taking that job. As I'm trying to motivate you, that's a very good decision if you're not taking up that job, because you are not meant for that job. You are meant to do something very much higher and better than that job. So your 5-year plans, your 10-year plans, your future plans are very important, and they are very important for you to take a decision. So my point is this: motivate yourself at every phase, whether you are failure or a achiever or a successful, doing a success event or a failure event. Classroom training, which everyone is talking about, all the people are here, you're trying to explain the trainings. The education system has been changed today. NEP is definitely very polished program, but trust me, it is new earning program. It's new education program, but it's new earning program for you all, for everyone, for your bright career and your bright future. Dear students, only and only one thing I would like to say here: please be serious, be focused, try to understand what we are trying to. We have the best of the team with us, and we are trying to make a best of the team out of you us. Sir, thank you so much for guiding our buds, the students, the best director, the best dean, the best faculty members, all the teachers and faculties.
TPO, all the clubs, extracurricular activities, sports activities, and media labs, libraries. What else? It's a long list, and we need more time to discuss and talk. We will definitely keep on meeting. This induction program is very, very, very important for us as well as for you, so that we can understand where are you stuck. So dear students, only few of you are here and few of them who are missing this important thing. So please give our message to them that being present in the college and the activities of the college in the class is very important, because you have to be in the college. You are coming to the college to be in the college, not outside the college. So you can be outside the college when you are your classes are over, but when your event is important. So I sum up here, and I congratulate you all for achieving this day, for achieving this journey till here, and I wish you all the best to do best in your careers and futures. And I thank you everyone to give me this opportunity to have word with you. Thank you so much. Thank you. I request Dr. Shivendu Rai, HOD BAJMC first shift, to propose a vote of thanks. Please, sir. मेरे भी मन में था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, सेकेंड ईयर के बच्चे और थर्ड ईयर के बच्चों का इंडक्शन प्रोग्राम क्यों। लेकिन आफ्टर इंडक्शन प्रोग्राम मुझे जो हमारे अभी BCA डिपार्टमेंट और BAJMC का होने के बाद मुझे लगा कि ये ज़रूरी था। बच्चों ने भी मुझे मैसेज करके पूछा कि सर फर्स्ट ईयर के बच्चों का होता है, और जो नए बच्चे आते हैं उनका ओरिएंटेशन, इंडक्शन, इस तरीके की चीज़ें होती हैं फाइनल ईयर के। तो मुझे लगा कि अभी जो हम अपकमिंग सेमेस्टर के लिए जो कल से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें, और हम क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे कल से क्लास में, वो हमने आज बता दिया। कि जो कल से हम क्लास में बताते कि आपको हम CO हमारा ये है, PO ये हमारा है, और जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में हमारा सिलेबस ये है, तो ये टाइम आपने बचा लिया। आपने जो हमें टोटल चाहिए था, मैं अभी BAJMC के आज HOD बात करूंगा कि हमको चाहिए था 126 क्लासेज हमें चाहिए था, और हमारे पास अभी है 90 क्लासेज। तो ये 2-3 क्लासेज हमारे उनको क्रेडिट्स सिस्टम समझाने में और क्लब की एक्टिविटीज समझाने में। तो क्लब के हेड अभी रुचि मैम तो यहाँ नहीं है, बट रुचि मैम आपका भी थैंक यू कि आपके 18 क्लब जो ये भारी भरकम जो क्लब है, इसके बारे में हमें बताने में बहुत टाइम टेकिंग ये काम था, तो आपने आज ही काम ये आसान कर दिया, तो इसके लिए रुचि मैम का भी थैंक यू। दूसरा, हमारे साथ ये TNP हेड डॉक्टर नविता मैम बैठी हैं, इनका तो मैं बड़ा थैंक यू बोलूँगा। कारण ये है कि मैम ने जो मेन क्यूरी होती है ना बच्चों का कि हमारा प्लेसमेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, सब मतलब बातों की बातें हैं कि सिर्फ बातों में बातें होती हैं, लेकिन आपने ये जो डिजाइन दिया ना इनको, तो मुझे लगता है कि बच्चे यकीन भी करेंगे। थैंक यू।